चलो। आज जो चैप्टर्स हम लेने वाले हैं उसमें पहला चैप्टर है TORT, टॉट। गॉट इट? तो टॉट का चैप्टर, वैसे तो ये चैप्टर अपने आप में इस तरीके का चैप्टर है कि जहाँ पे आप पढ़ोगे तो ऐसा लगता है सब कुछ आता है, थोड़ा इजी है, लेकिन कई बार वो डाइसी हो जाता है। ओके, सो उस चैप्टर पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, टॉपिक्स वगैरह ध्यान रखना, उसके बारे में लेट्स हैव अ डिस्कशन। सो टॉट के चैप्टर में कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें एंड क्वेश्चंस एंड आंसर्स, लेट्स सी। What did Edmund Burke say about justice? जस्टिस के बारे में एडमंड बर्की का क्या कहना था? एडमंड बर्की एक पर्सन था, ही वॉज अ वेरी रिनाउंड स्कॉलर, और उसने जस्टिस के बारे में ये कहा था कि जस्टिस इज एज ग्रेट एज द पॉलिसी ऑफ द सोसाइटी इज। तो जैसी सोसाइटी वैसा जस्टिस। इसलिए आपने देखा था कि अफगानिस्तान जैसे एक रीजन में जहाँ पे तालिबान का राज होता है तो उनका जस्टिस का सिस्टम उतना है। अगर आप डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हो तो आपके जस्टिस वैसे होती है। और सिविल सोसाइटी से निकलता है टॉट। इफ यू डोंट हैव अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, आपको टॉट नहीं मिलेगा, देन इट विल बी अ एटोक्रेटिक सोसाइटी। मैं जो बोलूंगा वही चलेगा। गॉट इट? व्हाट इज द टॉट? व्हाट इज द टॉट? टॉट इज अ civil wrong that is not exclusively a breach of contract or breach of trust. Tort is a civil wrong which is not exclusively a breach of contract or a breach of trust. Okay, what is the difference between public wrong and a private wrong? What is the difference between a public wrong and a private wrong? Okay, see, public wrongs are violation of public laws and are the offenses against the state, while a private wrong are breaches of a private law and against the individuals. That is the difference. इसलिए टॉट इज नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि वो प्राइवेट रॉन्ग हो जाता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन टॉट इज अ पब्लिक रॉन्ग क्योंकि वो सोसाइटी को इफेक्ट करता है। ओके, ट्रेन में झगड़ा करोगे, झगड़ा वो प्रॉब्लम वाला है, लेकिन अगर प्राइवेटली झगड़ा करोगे दैट इज नॉट अ इशू, दैट इज अ सेपरेट थिंग, वो इंडियन पिनल कोड में जा सकता है। रास्ते पे झगड़ा करोगे देन इट इज अ स्टेट मैटर। अगर आप घर पे झगड़ा करते हो दैट इज योर पर्सनल मैटर। क्लियर? Then, according to Limitation Act, how is tort defined? According to Limitation Act, how is tort defined? Tort is a civil wrong. That is not exclusively breach of contract, breach of trust. That is a Limitation Act. Okay? Acha, tell me, what is the remedy for tort? What is the remedy for tort? Remedy for tort is unliquidated damages. What is unliquidated damages? What is unliquidated damages? मॉनेटरी फॉर्म में नहीं होना चाहिए। सी, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब जो गलती है उसको सुधारना है। ओके, अगर आपके सोसाइटी में जो चीज गलत हो रही है उसको सुधारना है तो इट इज टॉट इज एन एक्शन फॉर द अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। इसका मतलब अगर लेट्स सपोज आप जिस सोसाइटी से निकलते हो वहां पे कचरा फैला हुआ है, तो आप जज से क्या मांगते हो? मुझे पैसा दे दो पर कचरा चलेगा? वो कचरा साफ होना चाहिए। गॉट इट? दैट्स व्हाट यू आर डिमांडिंग। देन what are the two important elements derived from the definition of tort? The two important elements derived from the definition of torts are there is a civil injury or wrong, and not every civil wrong is a tort. There is a civil, but not every civil wrong is a tort. Okay? So there is a civil injury, something is going wrong in the society, लेकिन कई बार आप कई चीजों को सोसाइटी में इग्नोर करते हुए चलते हो। अभी इस तरीके से सड़क पे रहना, ये सब चीजें एक्चुअली एक सिविल सोसाइटी में अलाउड नहीं है, लेकिन क्या है, अभी गरीब बच्चे रहते हैं। ओके, जो जिनके पास घर नहीं है वो लोग रहते हैं, तो फिर उनके लिए अभी क्या कर सकते हैं? एक लेवल तक मदद करते हैं लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है, तो सोसाइटीज में है, इवन सिविलाइज सोसाइटीज में है। ओके, बड़ी बड़ी यूएसए, कनाडा, सिविलाइज डेवलप सोसाइटी में भी है जो सड़कों पे रहते हैं। क्लियर? देन describe the distinction between tort and crime, contract, trust, quasi contract. What is a tort, a crime, a contract, trust? क्योंकि tort दिखता उनके जैसा है लेकिन होता अलग है। See, tort is a civil wrong, crime is a criminal wrong. Tort is differs from breach of contract, breach of trust, and quasi contract because the nature of the appropriate remedy is provided by the law.
बिकॉज इन केस ऑफ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, आपको लीगल रेमेडी है, आप कोर्ट में जाके केस कर सकते हो। लेकिन टॉर्ट एक ऐसा नेचर है जहां पे आपको लीगल रेमेडी मिले न मिले डिपेंड करता है। इट्स मोस्टली अ सिविलाइज्ड केस। गॉट इट? क्लियर? रिमेंबर दैट। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैमेज इन द कंटेक्स्ट ऑफ टॉर्ट? Damage refers to legal loss or violation of legal right. Damage refers to a legal loss or violation of a legal right. That is the damage in context. Acha, how is civil wrong in tort law redressed? How is civil wrong in tort law redressed? Redress matlab rectified. Redress matlab solved out. So civil wrong in the tort law is redressed through action of unliquidated. अब समझ में आया what is unliquidated damages? You need an action of unliquidated damages. Okay? Then define the damage in context of legal rights of infringement. Define the damage in the context of legal rights of infringement. What is the damage? Damage refers to monetary compensation in the terms of money or infringement of legal rights. Damage refers to a monetary compensation in terms of money, okay, for infringement of your legal rights. Remember, damage refers to a monetary compensation in terms of money for the damage of your legal rights. Acha, what are the two types of damages? There can be a liquidated damages and unliquidated damages. There can be a liquidated damages and unliquidated damages. Okay? Then describe liquidated damages. What are the liquidated damages? They are predetermined fixed compensation for loss such as breach of contract. They are predetermined fixed compensation for loss. ठीक है? Unliquidated में आप determine नहीं कर सकते because वो situation to situation बदल जाएगी. So liquidated damages are predetermined fixed compensation for loss for the breach of contract. Okay. अच्छा, what is the unliquidated damage? Unliquidated damages refers to damage that is not predetermined and decided by. So unliquidated damages refers to damages which are not predetermined, decided by parties involved. Perfect. Very good. According to Supreme Court of India, what is the foundation of law of contracts? According to Supreme Court of India, what is the foundation of law of contracts? That the law of contract is founded and structured on the principle that no one has a right to intentionally or innocently injure or harm others. That is the foundation. That no one has a right to intentionally or innocently injure or harm others. ये टॉर्ट का फाउंडेशन है. क्लियर? इसी वजह से आप टॉर्ट क्लेम कर पा रहे हो. ओके. डिस्क्राइब द लॉ अकॉर्डिंग टू लेडन बी जॉनसन. व्हाट इज द लॉ? Law is great civilizing machinery that liberates or redress to build and subdues the desire to destroy. Law is a civilizing machinery that liberates the desire to build and subdue the desire to destroy. It can unite people out of fear, love, or reason. It can unite people out of fear, love, or reason. Okay, that is the law. And that's why you need a lawful society. Okay? Otherwise, if you have a society, because आज भी globally इतनी society है जहाँ पे law ही नहीं है. I'm not kidding. If you go to Afghanistan, 27-28 कबीले हैं अलग अलग आज भी. Taliban is just one of them. They don't have a state-based law. So what is happening? अगर वहां पे लॉ एंड ऑर्डर अपनी जगह पे है ही नहीं तो हर किसी का एरिया का अपना लॉ. That's called the principle of animal kingdom. Clear? Then, what is a civil wrong? What is a civil wrong? A civil wrong refers to a situation where someone suffers a loss, such as a financial or a reputational damage due to negligence of the other party. What is a civil wrong? A civil wrong refers to a situation where someone suffers a loss, such as financial or reputational, due to negligence of other party. अब याद रहेगा? Very good.
What are the examples of civil wrong? Civil wrong can be tort, breach of contract, breach of trust, and breach of equitable obligation. What is the example? It can be tort, breach of contract, breach of trust, or breach for equitable obligations. Okay. What are the general conditions for a tortious liability? What are the general conditions for a tortious liability? To establish a tortious liability, there must be a wrongful act or omission by the defendant that causes harm to the plaintiff without just cause or excuse. Barabar. So in case of tort, to establish a tortious liability, there must be a wrongful act or omission by the defendant to the plaintiff. Okay? Without any just cause or excuse. Okay? What describe the concept of wrongful act in a tort? What are the wrongful acts? A wrongful act in a tort law refers to an act that is legally wrong as regards the party complaining. It should prejudicially affect the legal rights of the party, such as their right to reputation, bodily safety, freedom, property. The person whose legal rights are violated without any legal excuse has right to take the legal action against the violator regardless of whether any loss resulted from violation or not. That is called wrongful act. So what is a wrongful act? A wrongful act in law of tort is an act which is legally wrong as regards the party complaining. It should be prejudicially affecting the legal rights of party, such as their right to reputation, bodily safety, freedom, or property. The person whose legal rights are violated without any legal excuse has a right to take the legal action against the violator, regardless of whether any loss resulted from the violation or not. Okay? Clear? Explain the example where a corporation can be held liable for the act. Can a corporation be made liable? Yes. The famous case of Glasgow Corporation versus Taylor. A corporation failed to put up proper fencing to keep the children away from the poisonous tree. As a result, the child plucked and ate the fruit of the tree and died. The court held that the corporation is liable for omissions. याद है वो केस डिस्कस भी किया था. एक गार्डन है, गार्डन के उधर बराबर से फेंस नहीं लगाया गया था. अब बच्चा खेलते खेलते वो पेड़ के पत्ते खा गया. अब पेड़ पॉइजनस था, मर गया बच्चा. ओके, तो एज अ रिजल्ट कॉर्पोरेशन लायबल है. द कोर्ट हेल्ड यस कॉर्पोरेशन इज लायबल बिकॉज प्रॉपर फेंसिंग करना जरूरी है. इसलिए गार्डन के आसपास देखो सारे म्युनिसिपल्स वगैरह फेंसिंग करके दीवार विवार या चीजें बना के रखते हैं. वहां पे वो लिख के भी रखते हैं, डोंट एंटर दिस प्लेसेस. ओके ओके, ट्रीज आर हार्मफुल और सो एंड सो, ये सब लिख के रखना पड़ता है. ओके, दैट वाज द 1922 केस. Okay, explain the concept of legal damage in tort. What is the legal damage? Legal damage in tort refers to a damage that is recognized by law. It means there should be a legal injury or an invasion of a legal right. An action can be brought even if there is no actual damage has been caused, as long as there is an infringement of a legal right. Legal damages are not necessarily the pecuniary and can claim any for harm, loss, damage, or money control something. So what are the legal damage in tort? Legal damage refers to a damage that are recognized in law. It means there should be legal injury or invasion of legal right. An action can be brought even if there is no actual damage being caused, as long as there is infringement of legal right. Legal damage are not necessarily pecuniary and can include harm, loss, damage, money, comfort. Alright, that's the definition of a legal damage. Yaad rakhna, what is the legal damage? Okay, what is the meaning of a maxim dimnum sine injuria in tort? Exactly. So damnum sine injuria is damage without injury. It refers to a situation where a person may have suffered damage but has no action in tort because the damage is not in the interest or protected by law of torts. In other words, a person causing another person, even if the substantial is not legally actionable unless there is a violation of a legal right. Okay, clear? So what is the damnum sine injuria? Damnum sine injuria means a
damage without any injury. It refers to a damage that has no action in tort because the damage is not in the interest protected of the tort. In other words, it is causing damage to the others. Okay, it is causing damage to the another person, even if substantial, even if it is substantial and not legally actionable, and there is a violation of the legal rights. Clear? Okay. Now describe the case of Chasemo versus Richards. कुछ नहीं मालूम है छोड़ो. In this case, the defendant started digging a well, disrupted the water supply to the plaintiff in a mill, resulting in shutdown. The court held the defendant is not liable because there was no violation of the legal right. याद है खड्डा खोदने लगा था अपने उधर. ओके तो यहाँ पे he was digging the well, अपने खुद के उसमें वो बना रहा था कुआ. ये वो वाला केस नहीं है जहाँ पे वो मिल वाला, वो रेलन वर्सेस फ्लेचर है, ये दूसरा था. ये अपने उधर कुआ बना रहा था. अब ये कुआ बना रहा था तो उसके बाजू में मिल थी जो शटडाउन मिल थी, बंद मिल थी. ओके तो इन दैट केस अब मिल के अंदर ये अपने उधर कुआ कर रहा है तो मिल के उसमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए. हो गया तो फिर मिल की गलती, उनकी दीवारें कमजोर. द कोर्ट हेल्ड दैट देयर इज नो वायलेशन ऑफ लॉ बिकॉज ही नेवर रीच टू द मिल एक्चुअली. ओके तो ये डिफरेंट केस था जिसमें रेलन का एक्सेप्शन था. अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय इंजुरिया साइन एडमनम? यस, injuria refers to an injury without any damage where there is an infringement of a legal right without resulting in harm and damage. The plaintiff can still sue for tort if no monetary loss is incurred. So injuria sine damnum, it refers to a injury where there is a infringement of a legal right without resulting any harm or damages. The plaintiff can still sue the tort even if there is no monetary loss occurred. Okay, clear? Explain the concept of absolute power, absolute private rights in relation to law of torts. Explain the concept of absolute private rights in relation to torts. Okay, what is absolute private right? Say absolute private rights are those that when violated are actionable per se without any need to prove any damage. Injuria sine damnum covers such, for example, a plaintiff to take legal action even if no harm has occurred. So what are the absolute private right? Absolute private rights are those that are violated as per, whether violated and actionable per se without any proof of any damage. Injuria sine damnum is a right, okay, where the plaintiff may not have suffered but yet he has a right to claim the damage. That's called absolute private rights. So आपका absolute private rights क्या है? अगर आप ट्रेन में खड़े और कोई आपकी फोटो ले रहा है तो आपकी परमिशन के बिना नहीं ले सकता. एक्चुअली आपका कुछ रॉन्ग नहीं किया है, लेकिन यस यू हैव एन एब्सोल्यूट प्राइवेट राइट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड योर प्रिवेसी. ओके तो इट इज नॉट अलाउड. कल को तुम्हारी फोटो को टेम्पर करके कहां यूज करेगा भगवान जाने. क्लियर? तो इट इज एक्चुअली नॉट अलाउड. Okay, what are the outcome of Ashby versus White case in 1703? Well, the outcome was the defendant was prevented by the plaintiff from violating an election. The court held that the defendant is liable to pay the compensation as he violated the plaintiff's legal right to cast the vote. Okay, so उसको वोट करने जाने नहीं दिया, उसको वोट करने जाने नहीं दिया. As such कोई गलत काम नहीं हो गया क्योंकि वोट करने नहीं दिया तो भी जिसको वो इलेक्ट करना चाहता वो तो इलेक्टेड हो गया, लेकिन ही स्टिल प्लीडेड कि मुझे वोट करने नहीं दिया. दैट्स अ वायलेशन ऑफ माय लीगल राइट. कैन ही डिमांड कॉम्पेंसेशन? यस ही कैन. ओके, what is the third condition of liability of tort? What are the third condition of liability of tort? Well, amongst the other conditions, third condition is called legal remedy. The third condition is called legal remedy. The first two are wrongful loss, okay, legal damage and legal remedy. So, which means a wrongful loss must come under the law, or the wrongful act must come under the law, and the main remedy for tort is actionable claim for unliquidated damages. The main remedy is actionable claim for unliquidated damages, although other remedies like injunctions may be there. Okay, acha, define self-help as a remedy for law. Is self-help a remedy of tort? Yes, it is. So, self-help is a remedy that allows the injured party to take action without going to court. Self-help is a remedy that allows to take action without going to the
quote, it is applicable to certain torts such as trespass to land, where the injured party can remove the trespasser without any excessive force. Okay, so it is applicable to certain tort that is called trespass to land, where the injured party can remove the trespasser without using any excessive force. That's called self-help. Okay, clear? Achha, describe the scenario where self-help can be applied to tort of law. Can self-help be applied to tort of law? Any scenario example? Okay, so this is the example. If someone finds a drunken stranger in their room without your permission, they are entitled to remove the trespasser using the reasonable force. This is an example of that. बराबर? Clear? कोई टिंग टोंग रात को तुमने दरवाजा खोला and he enters in your room. अरे मेरे घर में कौन आ गया है? And you're like, who are you? ये कौन घर के अंदर घुस गया है? So you can use reasonable force to remove that person. Okay? Clear? So when someone finds a drunken stranger without any permission and they are entitled to remove the trespasser using a reasonable force if necessary. This is an example of self-help. Remember that. Okay. Differentiate between tort and a breach of contract using example. Differentiate between tort and a contract using breach of example. Anyone? छोटे से आंसर में हो जाएगा नहीं? Tort, when a passenger sues a railway company for injuries which is caused by negligence of his employee, and while a breach of contract when a patient sues a surgeon for injury during the operation due to negligence. तो अगर आप रेलवे में अच्छे से टिकट विकेट बुक के करके आपके खाने के दैट इज बैठे हो और स्टेशन का जो एम्प्लॉय है आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो और वो खाना पीना आपके देख के ऐसे रख के जाता है, खाना गिर गया, उसको बोला रात को सोने के चादर वादर चाहिए, मुंह पे मार के जाता है, तो यू आर इल ट्रीटेड. कैन यू फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट रेलवे? आप रेलवे ने पर्सनली आपसे कोई वेंडेटा नहीं रखा है. एम्प्लॉय मस्ट बी फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉय, लेकिन कैन यू स्टिल फाइल अ केस? दैट्स एग्जांपल ऑफ टॉट. नॉट ट्रीटेड वेल, योर लीगल राइट्स आर इन्फ्रिंज्ड. लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या? डॉक्टर ने नेग्लिजेंस दिखाया, इट्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर? ओके, so that was some of the question. Let's see further. Okay, describe two interpretation of mens rea of tort. Tort में भी mens rea होता है, तो what are the two interpretation for mens rea and tort? हाँ, पर interpretation पूछता हूँ तो guilty mind क्या हो गया? Well, there should be a fault or state of mind when relevant, and the liability is without any fault. The two interpretation. There should be a fault or a state of mind, but the liability is without any fault. कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा था. तो टॉर्ट के अंदर लाइबिलिटी में आपने कुछ गलती नहीं की है, लेकिन जो भी आपके पर्सन ने किया है उसके लिए भी आपकी लाइबिलिटी अराइज हो जाती है. Got it? तो that's where tort का mens rea compared to criminal law का mens rea थोड़ा अलग होता है. और ये समझाया भी था कि याद रखना tort mens rea is not same as criminal law mens rea. Okay? Then give an example of liability without fault in tort of law. Give an example of liability without fault. Liability without fault in law of torts. Well, this way. In defamation, the defendant can be made liable even if there is no intendant to become defamed. और कोई तुम्हें गाली दे के जाता है, तुम एक्चुअली वो गाली तो बन नहीं जाते, लेकिन स्टिल यू कैन फाइल अ डिफेमेटरी केस कि तू मेरे को डिफेम करके गया. क्लियर? ठीक है. सो इन डिफेमेशन द डिफेंडेंट कैन बी मेड. पुराने जमाने में डिफेमेशन के केसेस कम न होते थे, इसलिए उस टाइम पे वो चल जाता था, क्योंकि गाली देके गया तो साधु संत बन जाओगे. लेकिन आज के तारीख में कोई नहीं बनने वाला. तो अगर तुम्हें या तो तुम काउंटर एक्टिवली तुम गाली दोगे, नहीं तो फिर डिफेमेशन केस बन सकता है. अगर तुमने रिकॉर्डिंग कर लिया, हाँ बोलना. क्लियर? देन what is strict or absolute liability of tort? What is strict or absolute liability of tort? ये तो याद होगा. So when the defendant is held liable without any fault, even if the harm has occurred without any intention or negligence, when the defendant is liable without any fault, even if the harm has occurred without any negligence on their part, that is called strict or absolute liability. Okay. Then when does the liability for inevitable accidents arises in tort? When does the liability for inevitable accidents arises in tort?
It arises when the damage is done by the escape of a dangerous substance which is brought and kept upon by on their land. मतलब liability तो arise होगी ही होगी when there is a escape of a dangerous substance which is kept on the land. याद आया ये रूल था रेलिन वर्सेस फ्लेचर. Okay, so आ गया. What is the rule of Raylan versus Fletcher? What is the rule? नहीं याद है. Very good. The rule is that the person who brings or accumulates something on the land that may cause damage to the neighbors, if it escapes, is responsible for resulting damage, regardless of negligence or precautions to be taken. So if somebody brought something on the land that is escapes and responsible for damage, regardless of negligence or precautions to be taken, that is called rule of Raylan versus Fletcher. Raylan versus Fletcher. Okay. What are the three types of cases where a person is made liable for the actions of others? Do करे कोई और भरे कोई. Vicarious and three. And okay, chalo. The three types of cases is when a person is made as an insurer of the other against the result of the activities. Okay, कुछ भी हो जाए इससे बात कर लेना मिल जाएगा पैसा. कुछ भी हो जाए कुछ भी ये है ना बस हो जाएगा. तो that is made the insurer of the other. Okay, or when a person interferes with the property or reputation of other. तेरा नौकर तेरा कुत्ता मेरे उधर घुसा कैसे. So you can make the liable as a principal, and when the master is made liable for the act of the servant. So these are the three instances where you can make the principal liable. These are the three instances where you can make the principal liable for that. Is that clear? याद रखना. Define vicarious liability. Okay, तो इतना simple मत लिख के आ जाना. Vicarious liability is when a responsibility for the wrong committed by someone else is imputed by law on the grounds of social policy or epidacy, and it involves holding the master liable for the act of the servant. Okay, so when there is a responsibility or wrong which is created by someone else, and it is imputed on the grounds of law or social policy or that is epidency, that it involves holding the master liable for the act of servant. Okay, so या तो ये social policy है या फिर circumstances वैसे हैं कि जहां पे आपकी liability आपके master पे होगी. That is called epidency. Okay, the expected liability goes to the principal. ठीक है, fine. How does Raylan versus Fletcher rule differ from traditional negligence principle? How does Raylan versus Fletcher rule differs from traditional negligence principle? मतलब गलती हो गई, गलती तो होती है. That is called traditional negligence principle. Okay, इंसान में तो गलती नहीं होगी क्या. तो the rule is Raylan versus Fletcher imposes a strict liability, meaning that a person responsible for bringing or accumulating something on the land is liable for any resulting damage, regardless of negligence. And the traditional principle requires proof of negligence for the liability to be established. Okay, so that's how Raylan versus Fletcher rules actually differs. Raylan versus Fletcher rules goes on a strict liability, that if the person is bringing something or accumulating something on the land is liable for resulting damages. Traditional negligence requires the proof of negligence. कि negligence में डॉक्टर negligent था, गलत दवाई दे दिया, तो it requires a proof of negligence. जबकि Raylan versus Fletcher उल्टा assume करता है that if you are negligent then you are liable. ओके okay? आपको पता है ये चीज आपके दुकान के उधर या सामान के उधर नहीं रखते. जैसे कई लोग बड़ा हुआ सिलेंडर रख के रोड साइड पे खाना बनाते हैं. वो एक्चुअली डेंजरस है. अगर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ तो कई लोगों को अफेक्ट हो सकता है. ओके okay?
क्लियर? तो बीच में वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया था कि डोंट कीप अ सिलेंडर टाइप ऑफ थिंग, लोग ने छुपा छुपा के रखी है लेकिन रखी है. सो दैट्स एक्चुअली अ रूल जहां पे इफ यू आर कीपिंग समथिंग एंड इफ इट कॉजेज अ हार्म इट कैन कॉज अ सीरियस हार्म. क्लियर? इसलिए रेलवे स्टेशन में वो रूल पास हुआ और उन लोगों ने इंडक्शन स्टोव लेके आ गए. रेलवे वालों पहले गैस रखते थे, सब हटा के इंडक्शन स्टोव लेके आए. रीजन वाज दिस कि गैस रखना मना कर दिया. ओके. देन what are the principle behind mens rea in tort liability? What are the principle behind mens rea in tort liability? Mens rea पता है ना? Okay. The principle is that the act itself creates no guilty mind in the absence of a guilty mind. The act itself creates no guilt in the absence of guilty mind. बराबर. एक बच्चे से इनोसेंट एक्ट हो सकता है पर उसके अंदर कोई गिल्टी माइंड नहीं था. दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस. ओके. एक बच्चे से गलती हो सकती है लेकिन उसके अंदर उसको कोई फायदा लेना या गिल्टी माइंड नहीं था. पर वैसी गलती अगर किसी बड़े से और ये लगे कि वो गिल्टी माइंड से था तो बुरा होता है. अब जैसे किसी को चोट लगती है और कोई दूर से खड़ा होकर हंसता है तो जिसको चोट लगती है उसको बुरा लगता है कि एक तो मदद भी नहीं की ऊपर से हंस भी रहा है. ओके. और ऐसी एक चोट ने पूरी महाभारत करवा दी थी जब दुर्योधन गिरा था और द्रौपदी हंसी थी. क्लियर? सो दैट्स उनको टॉट पढ़ाना चाहिए था. So the concept of natural use of land in the context of strict liability. Clear? So describe the concept of natural use of land in the context of strict liability. What are the concept natural use of land in the concept of strict liability? नहीं? The natural use refers to the activities that are not essentially dangerous, are common for the person to have their own land, such as putting a water pipe installation, mining, lighting a fire, necessary for wiring electricity. अगर आप अपने लैंड का ये यूज कर रहे हो, अगर आपने फ्लैट में इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स वगैरह लगा रहे हो, that is not called putting something which is dangerous to life. Because then it is a natural use of land. आप अपने घर में गैस पाइपलाइन लगाते हो, it may be dangerous, but that's not something that you're endangering life of everyone in the society. Okay, that's allowed. Okay, so that's called natural use of land. Okay, and activities which are essential for life may be dangerous, but they are essential for life. So then it is not causing any harm to the other party or the society at large. Clear? समझा? अब ऐसा भी कई घरों में होता है कि आपके घर में अचानक से आग लग गई, शॉक सर्किट हो गया. यस, होते हैं. तो ऐसे सिचुएशन में अगर ऐसा कुछ हो भी जाए, यू डिड जस्ट व्हाट हैज टू बी डन. क्लियर? इसके ऊपर सोसाइटी आप पे केस नहीं कर सकती कि व्हाई डिड यू कीप वायर एंड गैस लाइन एट योर होम. क्लियर? सो दैट्स natural use. Acha, under what circumstances does the rule of strict liability does not apply to non-natural use of land? Under what circumstances? Non-natural use कर रहे हो फिर भी strict liability नहीं लगेगा. Anyone? नहीं? The rule of strict liability does not apply if the damage is due to the natural use of land and the plaintiff has consented to the accumulation of the dangerous thing, or if the harm is caused by a third party over whom the defendant has. That is how it is. कि आप तो नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड कर रहे हो तो डज नॉट अप्लाई. यस, द डैमेज इज ड्यू टू द नेचुरल यूज ऑफ लैंड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. इफ द प्लेंटिफ हैज कंसेंटेड द एक्यूमुलेशन, आपकी परमिशन से लेके यहां पे किसी ने लेट्स सपोज सूखा कचरा रख के गया. क्लियर? और कोई तीसरा ही आदमी उधर आग लगा के चला गया. अब दुकान के बाहर आग लग गई, बोलो. तो यू हैड टेकन अ परमिशन के यहां पे कचरा रख रहा हूं बाय द टाइम आई एम क्लीनिंग माय शॉप. अब पीछे से कौन आग लगा के गया, गॉड नोज. क्लियर? तो यू कैन नॉट बी मेड लायबल फॉर दैट. समझा? गिव एन एग्जाम्पल फॉर नॉन नेचुरल यूज ऑफ अ लैंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. नॉन नेचुरल यूज ऑफ अ लैंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. Anyone?
establishing a reservoir for generating power on the residential land. आपको मालूम है आपकी सबके सोसाइटी में इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स लगे हुए हैं और उनके पावर कनेक्शंस हैं. तो इफ यू आर एस्टेब्लिशिंग अ रिजर्वायर सो दैट योर, उस जमाने में क्या होता था कि हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से आती है. तो ग्रिड जहां पे लगा है वहां पे एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है. अब जो सोसाइटीज ग्रिड के पास होती है वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सबसे ज्यादा पावरफुल होती है. पर अब जो ग्रिड जिधर है वो तो उधर है. क्लियर. तो क्या हम बोले कि ग्रिड पुट अप करना गलत है? क्लियर. सो दैट इज, और उस जगह पे एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सबसे ज्यादा पावरफुल होती है. एज अ रिजल्ट अगर आपकी सोसाइटी ग्रिड के आसपास के एरिया में है तो आपकी सबकी बॉडी में करंट का एलिमेंट ज्यादा इम्पैक्ट करता होगा. क्लियर. आपके मोबाइल के सिग्नल्स में भी कई बार ऐसे इश्यूज आते होंगे. अगर नहीं आते वैसे इश्यूज तो फिर इसका मतलब आपकी सोसाइटी में सेफ डिस्टेंस है. जनरली ग्रिड्स के एरिया से सोसाइटीज को सेफ डिस्टेंसेस पे रखते हैं. ग्रिड्स जनरली रेलवे स्टेशन, हमारे उधर रेलवे स्टेशन के आसपास में रखते हैं क्योंकि रेलवे के उधर, लेकिन रेलवे में ट्रैवल करते समय भी ध्यान रखना होता है. क्लियर. देन what is the implication of the plaintiff giving the consent for accumulation of the dangerous thing on the defendant's land? Okay, what are the implication of the plaintiff giving the consent to accumulation of the dangerous thing on the accumulation land? That is, plaintiff ने बोला हाँ ये सर मैं इधर सामान रख लूं, मैं थोड़ी देर इधर जाके आता हूँ. ओके, इसमें कॉटन और पुरानी चीजें हैं, बस मैं बस अभी जाके आया. आपने बोला ठीक है रख लो, ये उसकी दुकान है पर कोई नहीं, रख लो. अब दुकान किसी और की, आपने सामान रखवा दिया. क्लियर. तो व्हाट इज हैपनिंग? if the plaintiff has consented, then the defendant will not be liable under the rule of strict liability. Clear? तो जिसने कंसेंट देते हुए रखवाया फिर वो लायबल हो जाता है. क्लियर. तो इफ यू हैव टेकन द परमिशंस एंड देन डन एन एक्ट, then you cannot be liable for that. The person who has given the permission can be made liable then. Clear? What is the defense for statutory authority? ये तो आता होगा. What is the defense for statutory authority? Exactly. The statutory authority has a defense like public bodies liability if they have taken reasonable care in performing the statutory. बराबर. एज यू कैन सी बहुत सारे काम चलते हैं कई जगह पे एरिया में, ड्रिलिंग चलती है. तो अगर वो ड्रिलिंग चल रही है और यहां से पत्थर उड़ के किसी को दूर जाके लगा किधर, अब उसको क्या मालूम था? ही वॉज नॉट एमिंग ना. तो इन दैट केस ही वॉज ड्रिलिंग एंड इट वेंट ऑफ एंड हर्टेड समबडी. ऐसा हुआ है. यस, ऐसे हुए इंसिडेंट्स. ड्रिलिंग के टाइम पे इसलिए बोलते हैं दूर रहो दूर रहो, क्योंकि पत्थर उड़ते हैं. Clear? So such kind of incidents happen. Ab that case, you cannot make the state liable for this thing. Is that clear? That is the liability can be fixed. Then, describe the defense for act of God. Okay? Tsunami, earthquakes. ये तुम्हारा रिजल्ट आने के बाद जो तुम देने वाले हो. तुम्हारे रिजल्ट आने के बाद जो डिफेंसेस देने वाले हो ना एक्ट ऑफ गॉड के, वही है. The defense for the act of God applies when an escape is caused by a natural causes without any human intervention which could not have been foreseen or prevented. Something has happened out of natural incident. We cannot control it. That's when is the best defense for this. Okay, that's what I said. तुम्हारे रिजल्ट आने के बाद तुम देने वाला. Something went wrong. I didn't understand what it went wrong, but something went wrong. Okay, it was act of God. Give an example for the defense of act of God. Okay, yeah. Example will be this. Heavy rainfall causes an artificial lake overflow to damage the nearby crops. और अभी बीच में हुआ भी था, खूब सारी बारिश हो गई थी और
अनियंस के या किसके प्राइसेस सडनली शूट अप हुए थे, इफ यू रिमेम्बर बीच में हुआ था, प्रोडक्शन एकदम हिल गया, टोमेटोज के भी प्राइसेस शूट अप हुए थे, दैट्स अ एग्जांपल ऑफ दिस, समथिंग वेंट ऑफ सडनली। ओके, अभी भी कुछ वेदर वाले परेशान है क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ठंडी बहुत जल्दी आ गई है और बहुत ज्यादा आ गई है। हाँ, तो वही समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतनी जल्दी का इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है। सी, हाँ, इस बार ज्यादा जल्दी है। Explain the defense of escape due to plaintiff's own default. What is the defense of escape due to plaintiff's own default? Well, the defense of escape due to plaintiff or defaults means if the plaintiff suffers damage due to their own intrusion of action, they cannot claim अपनी खुद की गलतियों के लिए फिर वो damages claim नहीं कर सकते। Okay, say for example also. Okay, provide an example for defense due to plaintiff own default. What an example? What example can you provide for the plaintiff's old default? Okay. The defense example is plaintiff's own default is when the thief enters the building, he causes a dangerous chemical to spill on themselves and they cannot claim any damages also. एक चोर अंटर किया, इधर चोरी कर रहा था, कुछ चमकता हुआ पड़ रहा था, ये क्या है, अच्छा लिक्विड दिख रहा है, वाह, थोड़ा पी के देखा, थोड़ी देर के बाद बेहोश, कैन ही क्लेम डैमेजेस? नहीं। ओके, so that's how it is. He spills a chemical on themselves also. तो सच काइंड ऑफ थिंग्स, या कभी कभी चोरी करते समय गलती हो जाती है, आपने कुछ चीज को पुल किया, हाथ टूट गया, so but he cannot even claim damages for that because he has entered the premises without permission. Clear? What are the two conditions for a strict liability for non-natural use of land? What are the two conditions for strict liability for non-natural use of land? The defendant must make a non-natural use of land and either damage is caused or use of land is dangerous. There should be a non-natural use of land, मतलब अपने जगह पे, अपने घर पे आपने वो चीजें रखी है जो एक्चुअली सोसाइटी ने मना कर रखी है, दैट इज कॉल्ड non-natural use of land. और इतना ही नहीं, the damage is caused by the non-natural use of land. तब जाके लाइबिलिटी अराइज होती है कि आपने घर में अगर कोई चीजें रखी थी और वो ब्लास्ट हो गई या इंपैक्टेड हो गई, तब जाके लाइबिलिटी अराइज होती है। क्लियर? समझा? एंड so these are some of the example of strict liability coming from this. Okay, now what case changed the applicability of rule of strict liability in India? The very famous case MC Mehta versus Union of India, very famous case था वो, 1987, Justice Bhagwati का judgment that India cannot be sitting and thinking that when British's court will pass an order similar to that of Raylin versus Fletcher, we have our own court and justice system, we can pass on own case, और इसलिए हमने strict and absolute liability को डिफर किया। एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी अलग होती है। हमने ये समझाया कि हर केस में आप स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं लगा सकते, आप एब्सोल्यूट लाइबिलिटी भी लगा सकते हो। अगर गलती एक की है तो पूरी क्लास को सजा देने की जरूरत नहीं है, उसी को सजा देनी है जिसकी गलती है। और अगर गलती एक ने की और पूरी क्लास उसके सपोर्ट में है तो सजा फिर सबको जाएगी। क्लियर? देन define the absolute liability in the context of hazardous and inherently dangerous industries. They are always deemed liable, na? The absolute liability means an enterprise which is engaged in hazardous or inherently dangerous industry
is obligated to compensate for any harm which is caused due to hazardous activity regardless of negligence being proven. भोपाल गैस ट्रेजेडी, अगर आप केमिकल इंडस्ट्री चला रहे हो तो यू आर ऑलवेज डीम लायबल. आप ये नहीं बोल सकते, अगर आप गैस प्रोडक्शन इंडस्ट्री चला रहे हो जहां पे ब्लास्ट होने पे इंपैक्ट हो सकता है, तो यू कैन नॉट टेक अ ग्राउंड कि ऐसी हमारी इंडस्ट्री में तो कभी ब्लास्ट हो ही नहीं सकता. ओके तो उन इंडस्ट्रीज को सेफ प्लेसेस पे रखना या दूर रखना जरूरी हो जाता है. आप घरों के पास में सॉफ्टवेयर कंपनीज रख सकते हो, लेकिन घरों के पास में इंडस्ट्रियल एरिया रखना बहुत मुश्किल ले रही है, क्योंकि उनको दूर रखना प्रेफरेबल है. जो इंडस्ट्रियल एरिया के पास रहते हैं उनको जनरली सुनने में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, देखने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरियाज के पास आवाजें बहुत आती है, तो एक सुनने का प्रॉब्लम और एक देखने का प्रॉब्लम जल्दी शुरू हो जाता है. ओके देन how did Supreme Court in MC Mehta versus Union of India define the duty of an enterprise engaged in hazardous industry? Well, इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लैंडमार्क था. समझाता हूं क्या था. Supreme Court held that the enterprise that is engaged in hazardous industry has an absolute non-delegatable duty to ensure the highest standards of safety and to compensate for harm and loss that is caused. That was a judgment. Clear? आप absolute strictly liable नहीं. Strictly मतलब मैं सबको liable कर दूंगा. एमसी मेहता ने स्ट्रिक्ट लाइबल केस वाला किया. यस, गंगा वाटर प्लांट केस. गंगा के पास बहुत सारे प्लांट इंडस्ट्री थी, जो ग्लास इंडस्ट्री, लेदर वॉशिंग इंडस्ट्री, सब पानी गंगा में छोड़ते थे. सबको उठा के शिफ्ट करने का ऑर्डर आया था. एक को नहीं, सबको. सबने बोला हम क्यों शिफ्ट हो, नहीं सबको. उस सब में एक कंपनी थी जिसका ऑफिस था सॉफ्टवेयर वालों का, उनको भी शिफ्ट करने का ऑर्डर आ गया. उनकी बिल्डिंग तोड़ने आ गए. उन्होंने जाके केस फाइल किया था. तो तब उस टाइम पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट लिया था कि नहीं, एमसी मेहता के दूसरे केस में भी ये आया था कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी फिक्स होनी चाहिए. इसका मतलब जो इंडस्ट्री हार्मफुल इंपैक्ट नहीं करती उसको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है. ओके सो यहां पे an enterprise that is engaged in the hazardous industry has an absolute and a non-delegable duty of the highest standard of safety to compensate the harm which is caused to the hazardous activity. That is how it is. Clear? Then, what is the vicarious liability in law of tort? What is vicarious liability? भी पढ़ा था, भी भूल जाते. It refers to legal responsibility of a person for a tort which is committed by another, such as a master tort for the servant or a principal tort for the agent. Got it? A master tort for the servant or a principal tort for the agent. Okay. Describe the principal liability in relation to wrongful acts or omission of another person. A wrongful act or omission of another person. What is the principle? And the thing is, the principle states that a person may be held liable for the wrongful acts or omissions of the another person through ratification, relation or abatement. Abatement मतलब help करना. Okay? या तो आपने उसको वो काम करने के लिए, रेटिफिकेशन मतलब कंसेंट देना, आपने उस काम करने के लिए कंसेंट दिया था और आपके काम की कंसेंट की वजह से दूसरों को नुकसान हुआ. या फिर वो आपका रिलेटिव है. लेट्स सपोज तुम घर पे गए, मालूम पड़ा पापा का किसी से झगड़ा हो गया, तो तुम भी आ गए, क्या रे, तो ये तुम्हारे रिलेशन की वजह से आ रहा है. यू आर सपोर्टिंग योर रिलेटिव. या फिर अबेटमेंट, हेल्पफुल. अगर आपने दोस्त की हेल्प की थी तो याद रखना, दोस्त पकड़ा गया तो वो तुम्हारा भी नाम ले सकते हैं, और तुम पकड़े गए तो दोस्त का भी नाम ले सकते हो कि मैं तो सिर्फ हेल्प कर रहा था सर. असली क्रिमिनल तो वो है, द कल्प्रिट. ओके सो दैट्स अ लायबिलिटी. अच्छा, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर वाइकेरियस लायबिलिटी इन मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप?
बस इतना ही. Well, the essential elements. Existing relationship between the master, he is correct. The servant must be committing a tortious act, second, and the tortious act must be done during the course of. ये तीन चीजें होनी चाहिए तो आप लाइबिलिटी फिक्स कर सकते हो. ये तीन चीजें होनी चाहिए तो आप लाइबिलिटी फिक्स कर सकते हो. ओके, समझा? एवरीवन क्लियर? Give an example of vicarious liability involving an agent. Okay, involving principal and agent. But ठीक है, चलो principal word लिखना रह गया. So that was a famous case of Lloyd versus Grace Smith case. याद है? The managing clerk of a firm of solicitor committed a fraud against the client while acting as the ordinary course of business. The principal was held liable. याद आया? साइन करवा के ले गया था. ओके, तो एक ओल्ड लेडी थी, उसको पता नहीं, अब एडवोकेट के ऑफिस से आया तो उसको लगा ठीक होगा, एक क्लर्क उस लेडी से साइन करवा के विल अपने नाम पे करवा ली. तो ये अपने आप में प्रिंसिपल कैन बी मेड लायबल. देन explain the liability of partners for the tort which is committed by one partner. Liability of partners for the tort which is committed by one partner. All the partners are liable. इसका खींच के देने का इसको. For a tort which is committed by a partner in the ordinary course of business, then all are liable. But both partners were held liable for a tort committed by one of them if they are committed jointly and severally. But if the tort which is committed by one of the partner, the other cannot be made liable. Remember that. Okay? इसका मतलब एक पार्टनर आते हुए रास्ते में झगड़ा करके आ गया. हाउ कैन द अदर पार्टनर बी मेड लायबल? उसके झगड़े की वजह से उसको जेल में डाला. विल द अदर पार्टनर बी पुट इन जेल ऑल्सो? रादर ही हैज टू गेट द बेल. Clear? But the act which is committed jointly in the ordinary course of business, तो liability है. समझा? सोच के लिखना. या Hamlin versus Austin case. Yeah. Describe the rule which was laid down in Raylin versus Fletcher. चलो ये तो बताओ. What was the rule? अभी तो पढ़ा था. If some person brings something on the property, okay, so what is the rule? That if you bring your boyfriend or girlfriend at your home, then read that. That a person who brings something on their land which is likely to cause harm, if it escapes, then strict liability for any damage which is caused if it escapes. बराबर? याद रखना, that's one of the rule of Raylin versus Fletcher, long held. So, describe the difference between a servant and an independent contractor. Say, what is the difference? और servant? अपने लिए. ठीक है. The servant is employed by another to perform services under the control of the employer, while the independent director is not controlled in the performance of their work. तो जब आप एक कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हो तो you don't come and direct him what to do. Rather, you only stand out there and see he is doing something. But when the work is given to a servant, you have to tell him what to do. You have to train him. You have to equip him. And then, when he is trained enough, then you can stand behind and see what he is doing. That's the difference between a servant and the independent contractor. Clear? Under what circumstances is an employer liable for the act of an independent contractor?
Under what circumstances is an employer liable for an act of an independent contractor? Liable employer for the act of independent contractor. Well, employer is liable for the act of independent contractor, not of employee. Okay, if they authorize the contractor to commit a tort, and if the tort is of a strict liability and there is a negligence on the part of independent. आपकी सोसाइटी में रिपेयर का काम चल रहा है किसी के घर का, घर के अंदर थर्ड करके खूब सारा कचरा निकाला है, और घर वाले ने क्या बोला, हाँ हाँ एक काम करो, सोसाइटी के गेट के बाहर है ना, उधर रख के आ जाओ, बाद में उठा लेंगे। सारा कचरा डाल के उधर डाल के आया, गेट के उधर ब्लॉकिंग हो गई है। गलती क्या हो गई, कचरा जिधर रखा था नीचे वो ड्रेनेज एरिया था, कचरा उसमें चला गया, सारा पानी ब्लॉक हो गया, सब लाइबिलिटी आ गई, क्योंकि घर से पानी जा तो रहा है लेकिन ब्लॉक हो रहा है। So that's how it is. The employer is liable for the act of independent contractor if they authorize the independent contractor, and if he's a strict liability for the negligence in the tort. Is that clear? Clear? Give an example when an employer is liable for the collateral negligence of the independent contractor. Give an example where the employer is liable for the collateral negligence of the independent contractor. Nahin? Okay. If the employer hires an independent contractor to perform a work on a highway and the harm is caused due to the contractor's negligence, then the employer is also held liable. Okay? मतलब आपने देखा होगा हाईवे पे बड़े बड़े वो बैनर लगाते हैं, लगाते रखते। अब वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया था, गड़बड़ क्या हो गई कि नीचे से वो थोड़ा वीक हो गया, पूरा का पूरा बैनर के साथ ये नीचे नीचे से गाड़ी जा रही थी, लाइबिलिटी आ जाती। ओके, दैट वाज वन ऑफ द केस एट नेशनल हाईवे में हुआ था कि इतना बड़ा सारा बैनर लगा रहा था, वो कुछ वेट कुछ ज्यादा था, पूरा का पूरा स्टैंड गिर गया और नीचे से गाड़ी जा रही थी, गाड़ी के ऊपर जोरदार। तो that is how the liability arises. So if the employer hires an independent contractor to perform the work in highway and the harm is caused due to the contractor's negligence, then the employer is held liable for that. Got it? क्योंकि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को जिस एम्प्लॉयर ने हायर किया था वो लायबल हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे when is the employer not liable for the tort of independent contractor? चलो ये एग्जांपल दो। Got it? नहीं। Remember, an employer is not liable for the tort of independent contractor if they have taken care in appointment of the contractor. अगर एम्प्लॉयर ये साबित कर दे, सर मैंने एक रेप्यूटेड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हायर किया जो अपनी फील्ड का प्रोफेशनल है, and I have taken care in hiring an independent contractor, then the employer is not liable. If he can prove that he has taken care, अगर आप अपने घर में साफ सफाई करवाने के लिए अभी किसी को बुलाते हो, कॉन्ट्रैक्ट देते हो, और आपने ये ध्यान रखा कि एक अर्बन क्लैप या किसी प्रोफेशनल पार्टी को बुलाया गया है, and you have taken due care in appointment that, तो उनसे हुई गलती के लिए तुम लायबल नहीं हो फिर। ठीक है? Then describe two conditions under which an act is deemed to be done in the course of employment. Describe two conditions under which an act is deemed to be done in the course of employment. When can you say an act is done in the course of employment? नहीं आया। If the wrongful act is authorized by the employer and the wrongful or unauthorized mode of doing the act is authorized by the employer. If the wrongful act is authorized by the employer, yeah, and the wrongful and unauthorized mode of some act authorized by the employer, then you say that this act was done in the course of employment. This act was done in the course of employment. Okay? Remember that. Now provide an example where the employer was held liable for the damage which is caused by employee's unauthorized action.
employer held liable for the damages caused by the employee's unauthorized action. कोई भी एग्जांपल दे सकते हो. हाँ, कोई भी एग्जांपल दे सकते हो. हाँ, ड्राइविंग नेग्लिजेंसली और ये सब बराबर. So this was example of Century Insurance versus Northern Ireland Road Transport का case. The driver of a petrol lorry caused an explosion and fire by striking a match, throwing it on the whole floor without transferring petrol. So that was a case that has happened. गलती से या जैसे भी, जैसे कई लोग ऊपर ट्रक में बैठ के बीड़ी चलाते हैं ना, बीड़ी चला के अब उसने नीचे फेंका लेकिन पेट्रोल उस समय लीक पे था, गड़बड़ हो गई, फायर कॉट अप. ओके, पूरा का पूरा पेट्रोल के साथ जल गया. तो पेट्रोल लॉरी कॉज्ड एन एक्सप्लोजन. सी, so that kind of incident can happen. What was the case of Bailey versus Manchester Sheffield versus Lincolnshire railway case? नहीं मालूम, छोड़ो, समझाता हूँ. In this case, a porter forcibly removed a passenger thinking that he was in the wrong train and the defendants were held liable. रेलवे में जो सर्विस करता है ना, और जो टिकट करेक्टर होता है, वैसे एक क्या बोलते हैं, एक हेल्पर कम अटेंडेंट होता है, उसको पॉटर बोलते हैं. ठीक है, जो टीसी की मदद करता है. तो टीसी ने जाके इस पॉटर को बोला, दैट गाय सिटिंग ऑन दैट प्लेस इज एन इंडियन, he should not be in the first class compartment, throw him out. And that's what happened. Thinking that he was in the wrong train or wrong compartment, उसको उतार दिया. Okay, वो आदमी चिल्ला के बोल रहा है, but this is the train that I should be catching. Okay, in that case, this was held to be a act of negligence. Okay, the act of the porter will make the railway liable. Okay, so that's why Manchester Sheffield Lincolnshire Railway was made liable for this. Okay, ऐसा ही केस हुआ भी था किसके साथ, महात्मा गांधी जी के साथ भी. उनको उठा के फेंक दिया था साउथ अफ्रीका के अंदर, याद है. एंड द पर्सन हु वाज थ्रोन हिम वाज अ पॉटर. ठीक है. What did Bombay High Court decide in the case of Dinbai Wadia versus Farooq Mobedjina and another case? Well, ये केस भी अच्छा था. The court stated that the principal may be held liable for the fraud or any other illegal activities committed by the agent within his authority. Got it? इसका मतलब अगर ज्वेलर की दुकान में काम करने वाला पर्सन ज्वेलर यानी ओनर की परमिशन से नकली ज्वेलरी बेचता है, विल द ज्वेलर लायबल फॉर दैट? ज्वेलर की दुकान में काम करने वाला पर्सन ज्वेलर की नॉलेज से नकली ज्वेलरी बेचता है, विल द ज्वेलर बी लायबल फॉर दैट? समझ में आया? So the court held the principal may be held liable for the fraud of any other illegal activity which is committed by the agent with his authority. ठीक है? According to Supreme Court in Lakshmi Narayan Ram Gopal and Sons versus Hyderabad ka case, what is the difference between a servant and the independent contractor? Well, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, the servant acts under the direct control and supervision of his master, while the independent is entirely independent and undertakes to produce a specified result using his own means. तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर खुद डिसाइड करता है उसे किसे लेके आना है, किसे नहीं लेके आना है, कैसे करने का है. Whereas the servant always asks a master कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है. Got it? So that's how the control defines who are or what you are. तो फ्यूचर में जाके आप जब अपना जॉब करते हो, whether you ask your master each time, then you are a servant. Whether you can take your own decision and the risk, then you are an independent contractor. Okay? What is the basis of the rule that makes a master liable for the act which is done by a servant in the course of employment? Well, same rule tha.
The basis of the rule is that the maxim which is called respondeat superior, that is, let the principal be liable, and the maxim qui facit pre allem facit per se, that is, he who does an act through another is deemed to be doing it himself. Okay, remember these two maxims. Respondeat superior, let the principal be liable, or qui facit allem facit per se, that is, he who does an act is deemed to do. Is that clear? Clear for everyone? Okay, very good. Very good. Let's see further questions on. Okay. Describe the position of state in India regarding the vicarious liability in tort. अच्छा, इंडिया में do we follow vicarious liability? इंडिया में do we follow the principle of vicarious liability? Well, unlike in England, India does not have a statutory provision for liability of the state. Okay, the court determines whether the government activity give rise to a tort is a sovereign or a non-sovereign function to decide if the state can claim immunity from the tort or not. So, is the state liable for vicarious liability? That will depend upon case to case. We do not have a law, but it determines from the sovereignty and non-sovereign function. What is a sovereign function? और नॉन सोवरेन जो उसमें नहीं आएंगे. या अनुष्का, स्टेट विल ओनली हैव नॉन सोवरेन फंक्शंस. ठीक है, चलो देखते हैं. What are the non-sovereign functions in the context of state liability in tort? Private individuals. Well, non-sovereign functions का मतलब activities of a commercial natures. Okay, those that can be carried out by private individuals. The state can be held liable for tort arising from non-sovereign functions. Got it? That's how it is. So activities which are commercial in natures, okay, and that can be carried out by private individuals. Very good. Define tort and its significance in the legal system. How will you answer this one? Define tort and its significance in the legal system. The tort legal system. Okay, so look at this. Tort is a civil wrong other than breach of contract and breach of trust, for which remedy is yoga defined. It encompasses all the wrongs for which the legal remedy is considered as appropriate and plays a significant role in the jurisprudence. तो अगर किसी टॉर्ट के लिए लीगल रेमेडी है तो ही वो लीगल सिस्टम में इंप्लीकेट करेगा. अगर नहीं है, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हैविंग द टॉर्ट इन द कोर्ट ऑफ लॉ. बराबर? क्लियर? तो अगर किसी टॉर्ट के लिए लीगल रेमेडी नहीं है तो व्हाट कैन यू डू? उससे गलती हुई है लेकिन यू कैन नॉट क्लेम इट. जैसे आपको वो एग्जांपल पढ़ा है, एक स्कूल के सामने दूसरा स्कूल खुल गया, कंपटीशन में एक होटल के सामने दूसरा होटल खुल गया. अब आइडियली झगड़ा हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, लेकिन लीगल रेमेडी कुछ नहीं है बिकॉज कंपटीशन इज अलाउड. बराबर? टॉशियस एक्ट है, सामने वाले ने एग्जैक्टली मेरे सामने अपना बिजनेस खोला है, लेकिन you cannot claim anything in court of law. Clear? Acha, describe the role of state in law of torts. What state has to do in law of torts? What state has to do in law of torts? Kya pata? That's how it is. State interaction with the citizens often raises legal problems that fall within the area of law of torts. The state activities and the liability of torts are important due to large role performed in the modern society. Because state ke bina you cannot have a tort. It is the state which is enforcing the law of torts. Those countries which are communist, they have no law of torts. उनका पुलिस वाला भी डंडा मारेगा तो कुछ नहीं बोल सकते आप, बिकॉज इट्स द कम्युनिस्ट नेशंस.
ओके, यहां पे आप ह्यूमन राइट्स ग्राउंड रेस कर सकते हो थैंक्स टू टॉट। बिकॉज अगर आपको ये लिबर्टी दी थी, लीगल राइट दिया था, तो थैंक्स टू दिस दैट यू आर एबल टू रेज द ग्राउंड ऑफ ह्यूमन राइट्स। Okay, so state does have interactions with the citizen for legal problems. In that case, anything that falls within the area of law, the state will have interference in that. Okay, the state will have any liability for the important duty in the society for that. Okay. Describe two rules which is mentioned in the content regarding the government of India and the government of the state being sued. Describe two rules mentioned in the content regarding the government of India and the government of state being sued. So when can you sue the state or the government of India? दो rule है उसके. Anyone? नहीं? The first rule is that the government of India or the government of state can be sued in same cases as Dominion of India corresponding to the provinces of Indian state. And the second rule is, that is the first rule, is that it is subject to any provisions of the act of the parliament or the legislature. कई जगहों पे आपने ये देखा होगा, so and so versus Union of India. कई जगहों पे देखा होगा इन रे, ऐसा लिखा रहता है. जब ये लिखा रहता है, इट इज द फर्स्ट रूल, दैट इज यू आर सुइंग द डोमिनियन ऑफ इंडिया और द डोमिनियन ऑफ द स्टेट्स इटसेल्फ, और यू आर सुइंग इन टर्म्स ऑफ दैट कि आप सीधा का सीधा गवर्नमेंट के साथ लड़ने की बात कर रहे हो. एंड दूसरा रूल ये होता है जहां पे एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर प्रोवाइड कि आप उनके खिलाफ केस कर सकते हो या उनके सामने केस कर सकते हो. Okay, so when can you fight the government? Either the act of the parliament or rule says so, या you're discussing the conduct of the state. जैसे पुलिस वाले जबरदस्ती घर से किसी को या सोसाइटी से किसी को उठा के लेके गए. Now you are fighting the state of for that purpose, habeas corpus. That's called the first one, the dominant or the parliamentary, that is province of India के हिसाब से, or the act provides. So लेजिस्लेचर अगर प्रोवाइड करता है सूटेबल रिलीफ तो उसके लिए. इंटरनेशनल ट्रीटीज में हम लोग फर्स्ट वाला ज्यादा यूज करते हैं, बिकॉज सो एंड सो वर्सेस इंडिया कर देते हैं, या द भारत, इफ यू कैन से व्हाटएवर इज फाइटिंग फॉर दैट. ठीक है. देन व्हाट वाज द आउटकम ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती केस? ये याद है क्या? परफेक्ट, perfect. State of Rajasthan versus Vidyavati case. The Supreme Court held that the ruling in the favor of legal representative of the deceased, holding that the state of Rajasthan is liable for the tortious act which was committed by the driver. वो कलेक्टर का ड्राइवर रैशली ड्राइव करते हुए रास्ते में आने में लोगों को ठोक के निकल गया था. एग्जैक्टली दैट वाज द केस. स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती केस. ठीक है. Then explain the significance of Crown Proceedings Act of 1947. Do you remember what are the Crown Proceedings Act? Exactly. The crown can be made liable for the wrong of the. Very good one. So Crown Proceeding Acts enacted in the United Kingdoms to remove the absolute rule of immunity from the sovereign. It has made the crown liable in the tort as similar to a private person for the acts of its servant or agent. तो अगर servant या agent ने कुछ गड़बड़ किया तो yes, now you can make the Prince Charles liable for that. Okay? Then defines the various liabilities such as mentioned in the content. Describe the vicarious liability as mentioned in the content. So vicarious liability means simple. It's a legal responsibility of one person or an entity for the actions or the omissions of the another person, even if the person responsible did not directly commit the act or omission. Okay. Then describe the old feudalistic notions of the justice which was formed on the basis of immunity of the crown in the United Kingdom. तो पुराने जमाने में जब वो अपने आप में इम्यून था, मतलब उनके खिलाफ केस नहीं हो सकता था, so in that case the king was incapable of doing any wrong and could not be sued. तो राजा से कभी गलती हो ही नहीं सकती, because if the king is wrong, the kingdom is wrong.
पहले ये चलता था। अब ब्रिटेन में क्या हो गया है, वो वहां पे मोनार्की रखते हुए डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस शुरू हो गई है। वहां पे आज भी किंग है, लेकिन फिर भी वहां पे डेमोक्रेसी, इलेक्शंस होते हैं। तो उन्होंने मोनार्की रखते हुए डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस शुरू कर दी है। तो अब मोनार्की यानी अगर किंग विंग रखेंगे तो उनको भी है तो इंडिविजुअली ना, तो लाइबिलिटी के हिसाब से यू कैन नॉट गिव इम्यूनिटी टू द किंग देन, क्योंकि इस तरह तो फिर किंग लोगों से कभी गलती ही नहीं होगी। तो इसके लिए क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट 1947 पास किया गया था कि राजा भी लायबल हो सकता है। ठीक है। देन डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ क्राउन इन इंग्लैंड विद रिगार्ड टू वाइकेरियस लायबिलिटी इन टॉर्ट। आज का तारीख में क्या पोजीशन है? सिंपल वही था। At common law, the crown could not be sued in tort for the wrong which is committed by its servant. However, due to crown proceeding as the crown is now vicariously liable for the tort which is committed by its servant. पहले के टाइम पे किंग के खिलाफ केस करेगा कौन? ओके okay? उसके लिए आपको एक पिक्चर देखनी पड़ेगी, सिंग इज किंग। उसमें भी ये डायलॉग था, किंग के खिलाफ जाएगा कौन? ओके okay? लेकिन अब थैंक्स टू द क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट, ओके, अब आप किंग के खिलाफ भी जा सकते हो। ठीक है। What is the rationale behind holding state liable for the tortious act of its servant? Okay. Why is state made liable for the act of his servant? सोच क्या थी, rationale क्या था? Why is state made liable for the act of the servant? बेचारे बैठे हुए चीफ मिनिस्टर जी को तो पता भी नहीं होगा सर्वेंट ने क्या कर दिया, या कलेक्टर और मेयर मस्ट नॉट इवन बी अवेयर कि उनका सर्वेंट क्या करके आ गया स्टेट के रूल्स के नाम पे, या बीएमसी कमिश्नर को पता नहीं, उसको मैं भेजा था ये तोड़ने के लिए, वो क्या तोड़ के आ गया। सो इन दैट केस the rationale is that states employs a large army of servants and aims to establish a socialistic state. There is no justification in the principle and or in public interest for the state not to be held liable for the vicarious liability of tortious act of the state. So why is state made liable? The answer is simple. If I don't make a state liable, then they can do anything and everything under the name of disguise. तो मुझे पता नहीं था। तो इफ वी मेक देम लायबल, तो कल को उसको फोन करके पूछेगा कि भाई तू करके क्या आया है, आई हैव गॉट ए कंप्लेन ओवर हियर। तो द बॉस शुड बी अवेयर दैट द सर्वेंट इज परफॉर्मिंग ओनली दोस फंक्शन जो उसको डेलीगेट किया गया है, एंड विद ड्यू केयर एंड डिलिजेंस। इसलिए रोडवे में भी खत्ता करते समय बाजू में बैरिकेड्स लगाते हैं, सो दैट द pieces do not fly away. Clear? So that is a responsible act to do. इसलिए the state has to be made liable. Otherwise, they will always claim ignorance. नहीं पता था और छूट जाएंगे। And the servant से आपको कुछ पैसा ही नहीं मिलेगा कि वो तो वैसे ही गरीब है। Clear? ये केस अगर इस तरह का अगर आपने देखा होगा तो कंगना रनावत का घर तोड़ के आए थे, वो भी केस ऐसा ही कुछ हुआ था, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट आया था कि कॉम्पेंसेटरी रिलीफ हैज टू बी गिवन टू हर बिकॉज यू डिड एन एक्ट विदाउट ड्यू केयर एंड परमिशन, और नोटिस देते सामने को रिप्लाई देने को टाइम नहीं दिया था। उसके वकील ने ये आर्ग्यू किया, हाउ कैन दे डू दैट? ठीक है। देन what was the ruling of Supreme Court in the case of State of Bihar versus Abdul Majid? चलो अब्दुल माजिद केस याद है, बिहार वर्सेस अब्दुल माजिद। हाँ याद आया, याद आया, याद आया, याद आया, याद आया, वेरी गुड, याद आया। ओके, Supreme Court recognized the right of the government servant to sue the government to recover the arrears of salary. Yes, that was the case. Okay, तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी सैलरी रिकवरी के लिए भी केसेस कर सकता है। The answer is yes.
सुप्रीम कोर्ट सेज यस, उसको भी एक पूरा हक है अपने सैलरी रिकवरी केसेस करने का. एंड व्हाट वाज द केस ऑफ कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी आउटकम? Ah, perfect. Perfect. Very good. In this case, the plaintiff sued the state of UP for return of the gold that was seized by the police officer but not returned. The court found that the police officer has failed to take the requisite care of the seized gold. पुलिस वाले ने गोल्ड उठा के बेच डाला. ओके, क्लियर. सबका माल अपना बनता, भाड़ में जाए जनता. So that's how it is. Describe the outcome of the trial's court decree in this case. So in this case, the outcome was the trial court decreed the suit. That was a different thing. What was the reason for reversal of the trial court's decree for the appeal? That was, we are talking about the case of Kasturi Lal. The High Court reversed the trial court case in the decree, and Supreme Court finding the police officer negligent in dealing with the plaintiff property. The answer is yes. The Supreme Court found that the police officer, based on the appreciation of relevant evidence, failure to do the यूपी पुलिस रेगुलेशंस एक्ट. तो ये वो पूरा केस का ब्रीफिंग थी. इसमें हुआ क्या था, कस्तूरी लाल इसमें वो गोल्ड उठा के बेच डालता है, और इसमें जो ट्रायल कोर्ट था, ट्रायल कोर्ट ने फेवर, दैट इज ट्रायल कोर्ट डिक्री द सूट कि यस, सामने वाले को कॉम्पेंसेशन मिलेगा, लेकिन हाई कोर्ट रिवर्स्ड इट. हाईकोर्ट ने रिवर्स किया. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यूपी पुलिस ऑब्लिगेशंस वो कंप्लाई नहीं किए गए हैं, देयरफॉर द सुटेबल रिलीफ शुड बी गिवन. इस तरह से कस्तूरीलाल केस में गोल्ड के लिए फाइनली स्टेट को लायबल किया गया था. ओके, सो दैट वाज द केस. Explain why Supreme Court rejected the plaintiff's claim despite finding a negligence on the part of the police officers. Well, the Supreme Court rejected the claim because the act of negligence was committed by police officer while the statutory powers which were categorized as sovereign powers. बेचारे को फिर भी कॉम्पेंसेटरी रिलीफ क्यों नहीं मिली थी? इस पूरे केस को आप मॉडल में पढ़ सकते हो, डिटेल दिया हुआ है. उसको इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये केस होते समय पुलिस वाला अपने सोवरेन पावर्स एक्सरसाइज कर रहा था. तो स्टेट कैन नॉट बी मेड लायबल फॉर द सोवरेन पावर्स. ओके, केस वो जीत गया इस बात में कि मेरा गोल्ड लॉस हुआ है तो स्टेट इज लायबल, बट देन क्या स्टेट कॉम्पेंसेशन देगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपका केस आप एक तरह से बराबर है, लेकिन स्टेट को कॉम्पेंसेशन नहीं लगता क्योंकि स्टेट एक्सरसाइज कर रहा था सोवरेन पावर. तो सोवरेन पावर एक्सरसाइज करते समय गलती के लिए स्टेट लायबल नहीं है. तो क्या करना पड़ेगा, उस पुलिस वाले को पकड़ना पड़ेगा और उसे सजा देके गोल्ड रिकवरी करनी पड़ेगी. अब जिसने गोल्ड बेचा था, स्टेट से आप पैसा नहीं मांग सकते. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया था इस केस के अंदर. जीतने के बाद भी हारे थे, ओके, या जीतने के बाद भी कुछ नहीं मिला, ऐसा केस था ये. ठीक है. So what was the key observations in Kasturi Lal versus State of UP case? And the key observation was that legislative enactments should be passed in India to regulate the control of claims of immunity similar to that of Crown. सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई हमें भी ऐसे लॉ चाहिए जहां पे स्टेट या पार्लियामेंट्री बॉडीज कैन बी मेड liable. We also need this kind of laws where the state or the parliamentary bodies can be made liable. अगर ऐसे लॉ हो तो हम भी स्टेट पे केसेस करके लाइबिलिटी के लिए, नहीं तो वो आदमी पूरा केस सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते लड़ते जीत भी गया, फिर भी कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिला. उसका रीजन आप खुद समझ सकते हो, कॉम्पेंसेशन देने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि स्टेट सोवरेन पावर्स एक्सरसाइज कर रहा. दैट्स हाउ इट इज. ठीक है. डिफाइन द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ सोवरेन एंड अ नॉन सोवरेन फंक्शन. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ग्राउंड लेके आया था. व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ सोवरेन एंड नॉन सोवरेन फंक्शंस? Okay, so
See, in the modern sense, the distinction between sovereign and non-sovereign does not even exist. It depends upon the nature and the manner of the power exercise. बिकॉज सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आज के तारीख में सोवरेनिटी क्या है, ये केस टू केस डिफर करेगा, कहना बहुत मुश्किल है बिकॉज हर चीज आपस में ही ब्लेंड अप हो चुकी है। तो आज के तारीख में सोवरेनिटी क्या है ये कहना अपने आप में आसान नहीं है। सो वेदर ही इज लायबल और नॉट। अभी जैसे पुलिस ऑफिसर होके भी साइबर क्राइम करता है, फोन पे बैठ के कॉल करता है, हेलो आपके वो इतना ओटीपी आया होगा। तो वेदर ही वाज डूइंग अ सोवरेन फंक्शन और अ नॉन सोवरेन फंक्शन, व्हाट शुड आई से नाउ? Clear? So that actually depends upon case to case basis. Another legal principle that was enunciated by Supreme Court is N. Nagendra Rao versus State of AP. Anyone remembering N. Nagendra Rao? N. Nagendra Rao versus State of, कुछ याद है? इतना सारा पढ़ लिया है कि याद ही नहीं क्या पढ़ा है। ठीक है। So this case was Supreme Court held supremacy arises from the constitutional provisions and the legislature is free to legislate on the topics and subjects that is assigned while executing is free to implement the administrator. Okay? तो याद रखना Supreme Court stated the legislative supremacy from the constitutional provisions. Legislature is free to legislate on the टॉपिक्स। लेजिस्लेचर इज फ्री कि हर लेजिस्लेचर अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है किस किस पे लॉ बनाना है और किस पे नहीं, एंड सब्जेक्ट्स असाइन टू इट व्हेन एग्जीक्यूटिव इज फ्री टू इंप्लीमेंट द टॉपिक। तो लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया तो अब एग्जीक्यूटिव डिसाइड करेंगे कि कैसे लॉ को इंप्लीमेंट किया जाता है। अगर एग्जीक्यूटिव अपने लॉ को इंप्लीमेंट कर रहे तो वो सोवरेन फंक्शन है। अगर एग्जीक्यूटिव लॉ को इंप्लीमेंट करके कुछ और कर रहे हैं तो वो नॉन सोवरेन। इज दैट क्लियर? एंड व्हाई इम्यूनिटी ऑफ क्राउन इज नेवर ऑपरेटेड इन इंडिया? एक्सप्लेन व्हाई द इम्यूनिटी ऑफ क्राउन इज नेवर ऑपरेटेड इन इंडिया। Why? It is never operated in India because in India the sovereign has always been liable to sue in tort or in contract and the common law immunity never operated. हम इंडिया में यूनियन ऑफ इंडिया या यूनियन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे केस कर सकते हैं, and therefore the sovereign has always been held liable, okay, to be sued for tort or to be sued for contract. tort जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर काम करते हुए गलती हो जाए आप स्टेट पे केस कर सकते हो। तो हमारे उधर तो ऑलरेडी वो केसेस थे, तो इसीलिए हमने कभी स्टेट को इम्यूनिटी दी ही नहीं थी, पर उन्होंने दे रखी थी इसलिए उनको इम्यूनिटी का दूसरा लॉ बनाना पड़ा। आप समझा? तो सिटिंग एट दिस प्लेस, सोचो ना, सिटिंग एट दिस प्लेस पीपल कैन स्पीक अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो एज यू कैन सी वी डोंट हैव गिवन एनी काइंड ऑफ इम्यूनिटी। नहीं तो डू द सेम थिंग सिटिंग इन बेंजिंग एंड स्पीक अगेंस्ट द प्रीमियर ऑफ चाइना एंड यू विल नो व्हाट कैन हैपन। बराबर? It's not, that's the difference that you can realize. Okay? So that's the kind of democratic freedom that you still have. ठीक है? And another one, let's see and understand that. Okay. So what is the principle enunciated in Nagendra Rao versus State of AP? And the principle was the legislative supremacy arises from the constitutional provisions and the executive are free to implement and administer the law. The legislative supremacy arises from the constitutional provisions and the executive are free to administer the law. Okay? How can a person challenge the validity of a law which is made by legislature? How can a person challenge the validity of a law made by the legislature? Can you challenge the law made by the legislature?
Okay, the person affected by law can challenge it but cannot approach court of law for negligence in making the law. आप आप लॉ में कमियां जो है उसको चैलेंज कर सकते हो, बट कैन यू चैलेंज द पार्लियामेंट के तुझे लॉ बनाना ही नहीं आता? सो द पर्सन अफेक्टेड बाय द लॉ कैन चैलेंज इट्स वैलिडिटी कि कॉन्स्टिट्यूशनली लॉ वैलिड है कि नहीं, बट यू कैन नॉट सिट विद अ ड्राफ्टमैन एंड से तुझे लॉ भी बनाना नहीं आता क्या? गॉट इट? क्लियर? And define the external sovereignty and provide an example for functions to indicative of this. What is external sovereignty, by the way? नहीं? ठीक है. See, external sovereignty refers to the functions that are political in nature and not amenable to the jurisdiction of ordinary civil courts. For example, defense of the country, raising of armed forces, making a peace at war, फॉरेन अफेयर्स, ये सब कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर होता है. दैट्स कॉल्ड एक्सटर्नल सोवरेनिटीज. इस पे चाह के भी कोर्ट कोई ऑर्डर्स पास नहीं कर सकती. गॉट इट? और वॉर लाइक सिचुएशन में जहां पे किसी को मारना सजाए मौत तक दे सकता है, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, उसमें आर्मी kills many of them, but that will not amount to be a that is civil wrong. Why? Because that is required for the defense. आज चल रही है ना वॉर, गाजा और ये सब के उधर. See, that's happened. Then describe the concept of public interest as mentioned by the court. What is the public interest, by the way? When you say it is a public interest, okay, so remember that. The concept has changed the structural change in the society. No legal or political system in India today can place the state above the law, as it is unjust and unfair for the citizen to be deprived of his property illegally without any remedy. तो एक टाइम था स्टेट किसी की भी प्रॉपर्टी छीन के लेके जा सकती थी, पर नहीं. नाउ देयर इज अ प्रॉपर लॉ एंड अ लीगल सिस्टम फॉर लैंड एक्विजिशन. सामने वाले को एक सूटेबल रिलीफ देना होता है कि अगर आपका रोड कटिंग में इधर दुकान कट रहा है तो आपको सूटेबल हम कहाँ पे क्या प्लेस दे रहे हैं, या फिर आगे कितनी फैसिलिटी या एफएसआई दे रहे हैं कि दुकान बढ़ाने के लिए. तो ये सब चीजें आज के तारीख में प्रॉपर लॉ हो गई है. तो देयर इज नो लीगल और पॉलिटिकल सिस्टम दैट कैन place the state above the law, as it is unjust and unfair for the citizens to be deprived of their property illegally and without any remedy. Okay, remember that. Describe the concept of welfare state. What is the concept? What is the welfare state? भूल गया. भगवान सबका भला करे, शुरुआत भली मुझसे करे. So the concept of welfare state, that is, it extend its functions beyond the defense and administration of justice to regulate and control the activities in various spheres such as education, commerce, social, economic, political, and even martial. That's a welfare state. So welfare state is a function which is just beyond the defense and administration. कंट्री को बचाना और कंट्री को चलाना सिर्फ एक काम नहीं है. यू नीड अ प्रॉपर एजुकेशन, यू नीड सोशल, यू नीड इकोनॉमिकल, यू नीड पॉलिटिकल एंड इवन मैरिटल मार्शल लॉज, मैरिटल लॉज एट इट्स प्लेस. गॉट इट? आज के टाइम पे सिर्फ रोटी कपड़ा मकान से काम नहीं चलता. यू नीड ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो टुडे. क्लियर? सो दैट्स द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट्स. Okay, then explain the importance of reconciling the duty of the state officials and the rights of the citizens in the welfare state. What are the duty of the state officials and what are the rights in reconciling that? Okay, so the answer is the welfare state, it is the duty of the state officials and the rights of the citizen has to be reconciled, that the rule of law is upheld and the interest of the society and people are protected. ये चाहिए कि ना तो स्टेट अबाव लॉ है ना सिटीजन अबाव लॉ है. लॉ इज अबाव बोथ द स्टेट एज वेल एज द सिटीजन. तो अगर
कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का पर्सन भी गलत करता है तो सिटीजन भी उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है. दैट इज नीडेड. दैट इज द रूल अपहेल्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सोसाइटी. What is the significance of demarcating line between sovereign and non-sovereign powers of the welfare state? What is the significance of demarcating? What is that sovereign and non-sovereign के बीच में ये sovereign है ये non-sovereign ये क्यों किया गया है? Well, the answer is clear. The demarcating line between sovereign and non-sovereign has been largely disappeared, and the state functions extend to regulating and controlling the activities in almost every sphere of life. आज चाहो नहीं चाहो, ऑलमोस्ट लाइक स्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एंटर्ड एवरी पॉसिबल एरिया. हर छोटी चीज में भी आपको गवर्नमेंट, आपको डिजिटल इंडिया में गवर्नमेंट मिल जाएगा, आपको छोटे छोटे एरिया में हर जगह पे आपका आधार कार्ड ये वो यूज होता है. तो दे हैव बीन वेल कनेक्टेड एंड देयरफॉर दैट इज द डिमार्केटिंग लाइन दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ. ठीक है. देन define vicarious liability of the state and its link to the negligence of officers. What is the vicarious liability and what is the link to the officers? Okay, तो अब तो ये तुमको आ ही चुका होगा. What is the vicarious liability? इतनी बार पढ़ लिया है. So vicarious liability of the state is, it refers to the state's liability for the actions or negligence of its officers. The determination of vicarious liability is linked to negligence of its, who can be sued. So vicarious liability refers to the state's liability for the actions or the negligence of its officer. The determination of vicarious liability is linked to the negligence of its officer, who can be sued personally for that. Clear? याद रहेगा? Okay, because I brought down this thing. ये बनाने में बहुत टाइम लगता है. Okay, but summarizing the entire chapter. ठीक है. Differentiate between tort and contract and breach of duty and the parties involved. Differentiate between tort and contract and breach of duty and the parties involved. Simple tha. In tort, the breach of duty is primarily fixed by the law and the duty is toward the person generally. In contract, the breach of duty is fixed by the parties themselves and the duty is toward the specific persons. Got it? तो लॉ में अगर लिखा हो कि ये गलत हुआ है और तुम्हें सजा मिलेगी तो दैट इट्स अ लीगल डैमेज, लीगल रेमेडी, देन इट्स अ टॉर्ट. ओके. और ये लिखा है कि किसी से भी गलत हो, जैसे ये रास्तों पे थूकने वाले को 200 रुपए का फाइन लगेगा. अब कोई भी थूके, कोई कॉन्ट्रैक्ट करके तो ही ना थूकने वाला है. सो इट इज अ टॉर्ट. क्लियर? जहां पे कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी है वो स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफिक नेचर के ऊपर जाती है. इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? क्लियर? So tort is a breach of duty primarily fixed by the law towards the person generally. In contract, the breach of duty is fixed by the parties themselves towards a specific person or persons. Is that clear? Very good. Very good. Describe the distinction between sovereign and non-sovereign function. What is the distinction between sovereign and non-function? I think that you should be aware now. The sovereign and the non-sovereign function depends on the nature and power and manner of its exercise. Okay, so एग्जाम में बैठ के लाइन ड्रॉ करके डिस्टिंक्शन करने मत बैठ जाना. एक्चुअली कोई डिस्टिंक्शन है ही नहीं. Okay, it actually depends upon the nature, the power and the manner how it is exercised. Okay, otherwise there is no such distinction because आज के तारीख में डिस्टिंक्शन करना बहुत मुश्किल है. पानी की बोतल बिस्लरी भी बेचती है, पानी की बोतल रेलवे पे भी बिकती है. अब वो रेलवे वाला ये थोड़ी ना बोल सकता है मैं सोवरेन फंक्शन कर रहा हूं. अगर पानी उधर खराब निकला तो आप उसको भी वापस कर सकते हो, उस पर भी केस कर सकते हो. ठीक है. Then what is the difference between strict liability and a fault liability in tort? Okay, what do you mean by this now? Strict liability and a fault liability. What is the difference between a strict liability and fault liability in tort? No one? Chalo. See, strict liability and fault liability are different in the forms of liability. Strict liability arises when the harm or damage is caused without any intention but due to lack of foresight or other factors.
fault liability arises where the breach of legal duty, that is willful, deliberate, malicious, indicating the negligence on the part of the person liable. तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड फॉल्ट लाइबिलिटी में यही फर्क है. देखो फर्क क्या है. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में ये होता है कि आपसे गलती हुई और सजा आपको मिल रही है, लेकिन आप वो गलती करना नहीं चाहते थे, हो गई है. फॉल्ट लाइबिलिटी वो गलती बच्चा करना चाहता था. देयर वाज अ मलेशियस विलफुल डेलिबरेट इंटेंट टू डू दैट काइंड ऑफ फॉल्ट. ओके. अब जैसे क्लास चल रही है और कोई जानबूझ के सीटी बजा रहा है, वो या जानबूझ के गाने बजा रहा है, वो गलती वो बच्चा करना चाहता था. दैट्स अ फॉल्ट लाइबिलिटी. अब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या है? दैट इज आपका फोन पड़ा था, यू वर नॉट अवेयर, साइलेंट करना भूल गए, बच गया, एंड सडनली सम ऑफ अ स्ट्रिक्ट प्रोफेसर हैज टेकन योर फोन, गिव इट. ऐसा हमारे साथ कोर्ट्स रूम में भी होता है. द जज आस्क फोन वापस दो. वहां पे 5,000 रुपया पेनल्टी है अगर आपका कोर्ट रूम में फोन बच जाए तो. तो एज अ रिजल्ट वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है बट फॉर नो फॉल्ट. एंड फॉल्ट लाइबिलिटी का मतलब होता है जहां पे आपका इंटेंशन है, आपका मलेशियस, और वो जानबूझ के आप वो कर रहे हो. दैट्स कॉल्ड अ फॉल्ट लाइबिलिटी. आप समझ में आया? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड अ fault liability. So don't get surprised and shocked in exams if this kind of questions do come up. That's all the part of the content there. Okay. Then describe battery in tort of law. What is the battery? Okay. So battery. Battery refers to a direct application of force to the another person without their consent or lawful justification. It is considered as a wrongful act. Even if the force is trivial, it does not cause any harm, and simply touching a person or with anger or without lawful justification can be battery. और अपने उधर रेलवे स्टेशन में तो रोज बैटरी होती रहती every day. Or these days looking at the nature of train cancellations, it's heavy battery which is going there. Clear? What is happening? There is the application of force to the other. There is no consent, but there is the application of force to the other person for the wrongful act. And this application, even if it is trivial, and somebody, मतलब हल्का सा भी push करो, yet it amounts to a battery. May not be a force, but yet it amounts to a battery. Okay? And touching a person in anger without lawful justification can cause a battery. Okay? Clear? Then, provide an example of a situation that can be considered as a battery. Now, example क्या दोगे एग्जाम में हमारे रेलवे स्टेशन में? एग्जाम्पल क्या दोगे? Well, in this case, you can give an example. Battery in law of tort is when someone intentionally incites a bull to attack the other person without their consent, even if the intention is to cause injury or fear or annoyance. The act of inciting a bull and causing a physical force to be applied constitute a battery. ये केस था. एक आदमी चल रहा है, उसके पीछे जानबूझ के एक लाल कपड़े जैसा कुछ मार के चले गए, एंड द इंसाइटिंग अ बुल उसको अटैक करने के लिए रेडी. दैट कॉजेज अ बैटरी. ओके. कई बार ऐसी चीजें आपको पहले पुरानी पिक्चरों में दिखाते थे, ऐसे कोई चल रहा है पीछे से ऐसे लाल कपड़ा छोड़ दिया और फिर बुल उस पर अटैक करता है. इट लुक्स लाइक एज इफ एनिमल ने मार दिया, लेकिन उसको मरवाने की कोशिश की गई. So these are the nature of battery that is there. Okay? Then describe the principle in Coward versus Badley regarding touching a person with a reasonable force. What do you mean by touching a person with a reasonable force? Okay? वो गाना है ना, टच कर गई टच कर गई. It is not a battery. Touching a person not more than a reasonable force is not considered as a battery. Okay? So touching a person, clear, not more than a reasonable force is not a battery.
तो आप रिक्वेस्ट के लिए किसी को सर उतरेंगे, तो दैट इज नॉट अ टचिंग, बिकॉज यू आर नॉट अप्लाइंग अ रीजनेबल, ए उतरेगा क्या? So there is a difference between the nature of touching. If you are not doing any kind of harm to any person, in that case, it's not considered as a battery as such. Okay. Then, what was a case principle decided in the case of Sitaram versus Jaswant Singh regarding the expel of a trespasser or using force for that? Perfect. चलो कम से कम याद तो है. So that is, the occupier is entitled to forcibly remove a trespasser from the premises, but the force should be with the reasonable and not excessive in nature. Exactly, that was the case. अगर आपके घर में कोई जबरदस्ती या आपके premises में कोई जबरदस्ती घुस जाते हैं, in that case with reasonable force, ओके कभी कभी दिखाते हैं वो पुलिस वाले जैसे बैरिकेड्स या बम्बू जैसे यूज करते हैं, पुलिंग द पर्सन आउट देयर विद रीजनेबल फोर्स कर सकते हैं. ये कुछ हुआ भी था जब एग्रीकल्चर प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे और वो लोग वो पार्लियामेंट्री या जंतर मंतर के थ्रू उसमें घुसने लगे, तो पुलिस वालों को रीजनेबल फोर्स यूज करनी पड़ी कि उनको धीरे धीरे वो पुश करते हैं पीछे. तो विद रीजनेबल फोर्स दे कैन डू दैट. ओके, नाउ व्हाट इज रीजनेबल फोर्स? दैट डिफर्स फ्रॉम situation to situation. Okay, that differs from situation to situation. Now, define an assault, and how does it differ from battery? What is assault and how does it differ? Okay, exactly. So assault refers when the defendant acts and creates an apprehension, perfect, in the plaintiff's mind that they will be subjected to battery. It differs from battery as it focuses on apprehension of the contract and not on the contact of itself. So apprehension पे पूरा खेल खेल रहा है. That is मैं ऐसा करूंगा. Okay, that's how assault is. So assault is a apprehension, whereas battery is actually using the force. Clear? Perfect. Now, give an example of an act that constitutes an assault. How will you give an example? Sir, assault हुआ assault. Okay. So, ले तेरा वाला example. Pointing a gun at someone and shaking a fist under his nose or surrounding them with a display of force is an assault. Okay? So इस तरह से पिक्चरों में भी दिखाते हैं, यहाँ पे बंदूक रख रहा है, यहाँ पे बंदूक रख रहा है, यहाँ पे बंदूक रख रहा है, मुंह के अंदर बंदूक रखता है. वो these are the nature of spoiling the gun. So rather, that's the nature of assault. That is, you're putting a fear in the other guy that you can shoot him. That's called assault. Okay? Now, what is the definition of bodily harm in the context of tort? Perfect. Good one. A willful act or a statement by the defendant that causes physical harm to the plaintiff is a bodily harm. A willful act or a statement. अब ये कभी कभी फिजिकली भी हो सकता है, कभी कभी किसी के कहने से भी हो सकता है. ओके कि तू उसको मार और उसने उसको मार दिया, तो ये भी हो सकता है. ओके, bodily harm can be on the directions also. Then provide an example that constitute a criminal force with the intention to cause a bodily harm. What example can you provide? What example can you provide? Okay. Lashing out someone horses to make them quicken in their pace without their consent is knowing may injure, frighten or annoy them is a bodily harm. पुराने जमाने में क्या होता था, कैटल्स चलती थी. कैटल्स मतलब वो चैरिट्स चलते थे, घोड़ा गाड़ी.
तो उस टाइम पे वो किसी के घोड़े को जोर जोर से और मारते जाना ताकि वो स्पीड पकड़े, बट दैट्स एक्चुअली अ बॉडीली हार्म. ओके, विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर इट वाज डन. तो उस टाइम पे ये सब केसेस हुए थे. आज के तारीख में बॉडीली हार्म कैन बी एनी काइंड ऑफ केस, लाइक नॉर्मल झगड़े हो जाते हैं, ट्रेनों में एक दूसरे को वो मारने के ऊपर ही चढ़ जाते हैं, लिटरली मार दर्द हो जाती है, किसी को कोई लोग नाखून मारते हैं. So these are the cases of bodily harm as such. Then describe the concept of strict liability in tort. What is strict liability? इतनी बार हो गया, अभी भी बताओ. अभी भी पता नहीं. Okay. So strict liability refers to a principle when a person can be held liable for a harm or damage which is caused to another person even if there is no intention to cause the harm. It is based on the idea that certain activities or conditions are inherently dangerous and who engage them should be responsible for resulting the harm regardless of the fault or negligence. So strict liability क्या है? It's a principle when a person can be held liable for a harm or damage caused to another person, even if there is no intention to cause the harm. Okay? And it is based on the principle. Okay, it is based on the principle that things can be inherently dangerous, who engage them and responsible for resulting into that kind of harm. Samjha? That's the nature of strict liabilities. Clear? So that's strict liability and other liability. So what are the essentials of false imprisonment? Yes, restricting a person to move from a particular place. Exactly. Yeah, Vidhi, you can give an example. Mob lynching could be a bodily harm. What is the procedure of filing case in tort में? आप bodily harm हुआ तो criminal case, और नहीं हुआ तो आप civil case फाइल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. Civil case personally कोर्ट में जाके फाइल होता है. Now the essential element for a false imprisonment is unauthorized restraint on a person's body or confining them with a certain limit or infringing their personal liberty. So it's a unauthorized restraint. आप किसी के मूवमेंट को रोक देते हो, किसी को बांध देते हो. समथिंग लाइक somebody can tie up this way, somebody can tie you with somebody, या फिर किसी को रूम में बंद कर देना, something like that. So it's a false imprisonment. Okay? What do you mean by malicious prosecution? झूठ बोलने के लिए केस. अच्छा, झूठ केस. Okay, fine. So malicious prosecution is an act of instigating a judicial proceedings against someone without reasonable and probable cause with a malicious intent resulting in any damage to the reputation or personal freedom or property. Okay? So malicious prosecution क्या है? It's an act of instigating a judicial proceeding. तेरे खिलाफ केस कर दूंगा. Okay? किसके लिए? Without any reasonable cause or problem. Okay? Resulting into any damage of property reputation. जैसे पुलिस वाला भी कभी कभी कुछ जगहों पे दिखाते धमकी देते हुए, ओके, तुम्हारे पापा के खिलाफ केस कर दूंगा, इतना से जेल में पड़े रहेंगे इतने सालों तक. सो दीज आर काइंड ऑफ threatened or malicious prosecutions. Okay? Then, what are the essential elements of a malicious prosecution? The essential element, yes, you are reading it correctly. A prosecution of the plaintiff by the defendant, the want of a reasonable and a probable cause, malicious intent, damages which is suffered by the plaintiff, and the termination of the prosecution in favor of the plaintiff is the essential. तब आप साबित करते हो कि ये prosecution malicious था. That is prosecution. प्लेंटिफ के खिलाफ केस हुआ, केस में कोई रीजनेबल या वांटेबल कॉज ही नहीं था, और damages, that is plaintiff has suffered something because of which he is claiming the damages, and the prosecution is terminated. Remember, you cannot file a malicious prosecution till तुम्हारा केस खत्म नहीं हुआ है. Because only after the prosecution is terminated, then you can file a malicious prosecution case. ये मेरे खिलाफ झूठा केस था. And give an example of false imprisonment.
A causes to Z to go within a walled space and locks Z in a and prevents Z from moving beyond the circumscribing line of the wall and therefore committing a false imprisonment. तो इस लाइन के बाहर मत निकलना. Okay, that's kind of false imprisonment. Describe the consequences of a false imprisonment. अगर false imprisonment हुआ तो क्या? What are the consequences? सर ये तो हमने सोचा ही नहीं था. Okay, the consequences. False imprisonment is a serious violation of person's right and liberty. They are confined within the four walls and prevented from leaving the place. That is a consequence. तो समझा नहीं? तू जेल वेल ढूंढ रहा था, वो पूछ रहा था फॉल्स इम्प्रिजनमेंट करने पे क्या. ओके, क्लियर? सो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट करने पे क्या वो पूछ रहे थे. व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, कि किसी को फॉल्स इम्प्रिजनमेंट रखा है तो क्या. तो बेचारे को घूमने फिरने नहीं दे रहे, लिबर्टी से डिप्राइव कर दिया है. कई बार घर में बच्चों को बांध के चले जाते हैं ऐसे लोग. तो दैट्स अ नेचर ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. क्लियर? देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट एंड मलिशियस प्रोसिक्यूशन. चलो ये तो बता. Okay, so false imprisonment involves unauthorized restraint of a person's liberty, while malicious prosecution involves instigating a judicial proceeding against someone without any reasonable clause and a probable clause, okay, resulting in the damage to their reputation, personal right or freedom. That's how it is. Okay, so that's the difference between false imprisonment and malicious prosecution. How can we distinguish tort from crime? वो crime आगे समझाता हूँ. That time, Piyush, it will be clear how tort is different from crime, because you have seen tort but not crime. Okay? Provide an example of malicious prosecution. चलो ये तो बताओ भी. कोई भी example. Mr. A ने B को ऐसे maliciously prosecute किया है. Okay. चलो, let's see the example. A had grudge against B and falsely implicated B for the theft. The court subsequently acquitted B, finding that the allegations was false. Then A can then file a recovery of damage suit for malicious prosecution. तो एक हैड ग्रज अगेंस्ट बी कि वो ऐसी क्यों है, वो वैसी क्यों, उसके खिलाफ केस फाइल कर दिया, फॉल्सली इम्प्लीकेटिंग हर, एंड देन द कोर्ट रिलीजेस हर. समथिंग सिमिलर अगर आपने देखा हो, सुशांत सिंह केस, रिया चक्रवर्ती वॉज इम्प्लीकेटेड. क्लियर? लेकिन प्रोसिक्यूशन नहीं बोल सकता क्योंकि उसके खिलाफ कभी केस नहीं हुआ, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन हुई थी. उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में ही उसको बंद कर दिया कि होल्डिंग इट दैट इट वाज अ सुसाइड, नॉट अ केस. ओके, लेकिन सुशांत सिंह फैमिली, they tried every best to say that Ria was responsible for his death. Okay, ऐसा मीडिया में जो डिस्प्ले दिखाया गया था वो यही था. So if you can see, YouTube पे जाके वापस चाहिए तो चेक कर सकते हो, you will find it. So that's called falsely implicating. Okay, कई लोग रेप केसेस डालते हैं, as he was rightly saying, yes. कई लोग ऐसे false implication के रेप केसेस डालते हैं. These are also cases. Okay. What do you mean by nervous shock? So nervous shock refers to any kind of physical injury, okay, which is caused by emotional disturbance, or it can be a fear rather than a direct impact.
and it must result in the form of an injury or illness to be considered as actionable in tort. So remember, nervous shock is a physical injury which is caused by emotional disturbance or a kind of fear rather than a direct impact. Okay? किसी ने डायरेक्टली कोई चोट नहीं की है बट उसके डर से तुम्हें चोट हो गई. Okay? And it resulted in some form of injury or illness considered, okay, as an actionable tort. So ये अपने आप में नर्वस शॉक का स्टेट हो जाता है. और कुछ बच्चों को कई बार ये भी देखा गया हॉस्टल वगैरह में इस स्टेट में आ जाते हैं, वो दूसरे बच्चों से डरने लग जाते हैं. तो दैट्स अ स्टेट ऑफ अ नर्वस शॉक. ठीक है, क्लियर? देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिबल एंड स्लैंडर? Okay, bye. So, libel is a defamatory statement which is made in permanent form, such as written words and pictures, while slanders refers to a defamatory statement which is made in transient form, such as spoken words or gestures. That is the difference between libel and slanders. Okay. Define defamation and its legal implications. So defamation is the act of making a statement that harms the reputation. It is considered as a tort and a crime in India, both libel and slander being punishable as an offense. Okay. Describe false imprisonment. Imposing a total restraint even if there is a short period on someone's liberties without sufficient law. Okay, restraining them. Explain the negligence in legal context. What do you mean by negligence in legal context? Okay. Negligence refers to inadvertence or carelessness. It occurs when a person fails to act in a reasonable manner, even if they may be innocent. Negligence can have legal consequences also. So what is the negligence? Inadvertence or carelessness. When a person fails to act in a reasonable manner, even if they may be innocent. Okay, it can have legal consequences. What is negligence then? So negligence is nothing but a breach of legal duty. It is a breach of legal duty to take care which results into the damage. Okay? जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करने वाले जो वार्ड के प्यून्स होते हैं उनको अपना पूरे हर एक चीज का ध्यान रखना होता है, लेकिन वहां पे अगर उनसे गलती हो जाए, मतलब ये रूम की दवाई गलत रूम में जाके रख दी, गलत रूम की दवाई गलत रूम में, वहां पे नर्स आई गलत रूम की दवाई गलत रूम वाले को चढ़ा दी, तो देयर कैन बी ए नेग्लिजेंस. ओके, तो जिसको डायबिटीज थी उसको शुगर का पिल चढ़ गया, तो ये गड़बड़ हो गई, पर इसके इम्प्लीकेशन पावरफुल है. देयर इज लायबल फॉर डैमेजेस. तो वहां पे रूम ऑफ नेग्लिजेंस हैज टू बी नेग्लिजिबल. क्लियर? और उसी तरह द लाइन ऑफ प्रैक्टिस दैट यू हैव चोजन, लीगल फील्ड, कॉर्पोरेट कंसल्टेशंस, ओके, कॉर्पोरेट एरिया, वहां पे भी नेग्लिजेंस का रूम सबसे कम होना चाहिए, नहीं तो सीधा पेनल्टी के लिए कंज्यूमर कोर्ट लेके जाते हैं. देखिए, क्योंकि आजकल पब्लिक सीधा कंज्यूमर कोर्ट में केस डालती है. अच्छा, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट नेग्लिजेंस? तो फर्स्ट, there is a legal duty to exercise a due care. Second, there is a breach of duty. And third, the consequential damage. ये तीन चीजें जिसके वजह से नेग्लिजेंस आती है. ओके, एंड
According to Consumer Protection Act, can a medical practitioner be held liable for the deficiency of services? Okay. Yes, medical practitioner can be held liable for the deficiency of services, and because that's a negligence we can talk. What was the ruling of Poonam Verma vs Ashwin Patel case? किसी को याद है वैसे? नहीं? ठीक है. ये था, the court held that the person practicing as a medicine without requisite qualification and enrollment can be held liable for negligence. So that was a famous case जहां पे वो पर्सन डॉक्टर बना हुआ था पर उसके पास डॉक्टरी का कोई सर्टिफिकेशन नहीं था. Okay, so without proper license, that's a case of Poonam Verma case. Then, how can companies be held liable for torts? How can companies be held liable for torts? See, companies can be held liable for the wrongs which has been committed by their employees even after considering the lifting of corporate veil. That's how the companies can be held liable. The companies can be liable for wrongs committed by the employees after considering the lifting the corporate veil. Yes, yes. Describe the legal maxim qui facit alim facit per se. क्या था ये? पढ़ा भी था ना? क्या था? Okay. He who acts through another, he who acts through another acts through himself. Acts through him. That is qui facit alim facit per se. He who acts through another. He who is the face of the another can be the face of himself. इसलिए वो facet है. Okay. What was Union Carbide Corporation versus Union of India case about? What was Union Carbide Corporation versus Union of India case about? Exactly. The Bhopal gas tragedy case, where the massive escape of dangerous gas causing injuries to the person. That was a famous case. Okay? That was actually the famous case of Bhopal gas tragedy, जहां पे strict and absolute liabilities को डाला गया था. Okay? Clear? So fine. So these are some of the questions that was there in law of torts. So old course में CRPC IPC अलग अलग चैप्टर है. न्यू में दोनों को मर्ज करके लॉ ऑफ क्राइम्स कर दिया है एंड काफी हद तक सेम चीज ही बात कर रहे हैं. ओके, सो वी आई हैव कवर्ड बोथ न्यू कोर्स एंड ओल्ड कोर्स का पूरा कंटेंट कवर किया हुआ है. ठीक है, सो लेट अस सी एंड अंडरस्टैंड द प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी फर्स्ट. तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सीआरपीसी ओनली. ओके, क्रिमिनल प्रोसीजर्स कोड क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, उन सब के बारे में बातचीत करते हैं और समझते हैं व्हाट इज व्हाट. Okay, so starting with the base level, what describe non-cognizable offense. So what is the non-cognizable offense? जिसमें without warrant arrest नहीं कर सकते. Okay, so she is saying without warrant arrest नहीं कर सकते. तो yes, a non-cognizable is an offense where police officer has no authority to arrest without a warrant. Perfect. That's a non-cognizable offense. What is the difference between a cognizable offense and a non-cognizable offense in terms of warrant requirement? So warrant is necessary in cognizable offense, while warrant is not necessary in perfect. Okay. Then, how information of cases handled in cognizable and non-cognizable offenses?
How information of cases handle in cognizable and non cognizable offenses. तो अगर किसी को इंफॉर्मेशन मिलती है दिस इज अ कॉग्निजेबल दिस इज नॉन कॉग्निजेबल तो क्या हाउ आर इंफॉर्मेशन ऑफ केसेस हैंडल इन दीज अरे नहीं मालूम इनकॉग्निजेबल ऑफेंस इंफॉर्मेशन हैज टू बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग read over to the informant and signed by the person in NCs. Okay, the police officer should not investigate without the order of the magistrate. That's how the information is handled. समझा कॉग्निजेबल में वो जो भी बोल रहा है उसको लिखना पड़ेगा. It has to be reduced to writing, read over the person, signed by the informant. Whereas in non-cognizable cases, police need a warrant. ठीक है? Give example of cognizable offenses. चलो. So you're correct. Writing, murder, thug, voluntary causing grievous hurt. These are example of that. Okay, clear? Yes, perfect. Then give an example of non-cognizable offense. Forgery, cheating, assault. Okay, good, good, good. So it can be non-cognizable includes fabrication of evidences in judicial proceedings, intentional hurt, interruption to the public servant in sitting any stage of judicial proceedings, voluntary hurt, assault, cheating, forgery, ये सब non-cognizable. ठीक है, good. What does Chapter 3 of CRPC deal with? The Chapter 3 of CRPC deals with power of the courts including to try offences. What are the various powers of the court? That is called Chapter 3. What are the various powers of the court? Okay. How are offences categorized in trial? How are offences categorized in trial? Preparation, attempt. Good. So they are offences categorized that is Indian Penal Code or any other law. They are categorized at whether the offense is a IPC offense or whether the offense is a any other law offense. Okay. What are the types of courts mentioned in section 26 of CRPC? What are the types of courts mentioned in section 26 of CRPC? High Court, Court of Sessions or any other court which offense is shown in the first schedule of CRPC. Yes, section 28 बाद में. High Court, Court of Sessions and such other court as mentioned. ठीक है? Describe the powers of High Court to pass sentence under section 28 of CRPC. Exactly. So yes, they can pass any sentence authorized by law, including that of death sentence by the High Court shall be passed subject to confirmation of the High Court. Okay. What are the powers of Chief Judicial Magistrate to pass sentences under section 29? Chief Judicial. So they can pass any sentence except death, imprisonment for life, or imprisonment for a term exceeding 7 years. The Chief Judicial Magistrate can pass any sentence except death, imprisonment for life, or imprisonment exceeding 7 years. Okay. Define the role of Chief Metropolitan Magistrate in section 29. Metropolitan Magistrate.
Chief Metropolitan Magistrate. Same. The Chief Metropolitan Magistrate has powers of the Chief Judicial Magistrate and the powers of the Metropolitan Magistrate and powers of the Magistrate of First Class also. The Chief Metropolitan Magistrate has the powers of the Chief Judicial Magistrate, the powers of the Metropolitan Magistrate, and the powers of the Magistrate of First Class also. Okay? Then, how are the offenses for which the maximum punishment is imprisonment for life decided according to CRPC? How are the offenses for which the maximum punishment is imprisonment for life decided as per CRPC? Okay. The offenses for maximum punishment should be decided by the sessions judge or additional sessions judge. The maximum punishment is imprisonment for life should be decided by the sessions judge or additional session. उससे कम नहीं जा सकता. Got it? Describe the concept of imprisonment in default of fine. Describe the concept of imprisonment in default of fine. हाँ क्या था क्या था Okay, chalo. So when the fine is imposed on the accused and it is not paid, the law allows the accused to be imprisonment for a term in addition to the substantive imprisonment awarded to him. So if you don't pay the fine, your term of imprisonment goes up. Okay? If you remember, it can be to the maximum or 1/4 of the term which is imposed by the magistrate. Okay? So, what is the definition of a cognizable offense now? How will you define it? And they are stated to be cognizable in the first schedule. Yes, sir? Okay. So, offense is an offense for which the police officer may arrest a person without a warrant. लिख सकते हो लिख सकते हो बिल्कुल लिख सकते हो Describe the concept of sentences in the cases of conviction of several offenses in one trial. Describe the concept of sentence. How will the court pass a sentence when there are several offenses happened in the one trial? ये आदमी ने चोरी भी की है, खून भी किया है, ये आदमी ने रेप भी किया है, इसने ये भी किया है, वो भी किया है. तो क्या करने का? Well, in that case, Section 31 imposes a multiple punishment when the accused is convicted for 2 or more offences at one trial. The court can sentence the accused to the punishment prescribed for each of the offence, with the order of imprisonment be determined by the court unless it is directed otherwise. तो प्रिंसिपल ऑफ हाईएस्ट रूल था. यस, प्रिंसिपल ऑफ हाईएस्ट कि अगर उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दी, डेथ नहीं दी, तो दैट मीन्स इट कवर्स एवरीथिंग. बराबर. वो डिस्कशन के टाइम पे भी मैंने बोला था कि इसने ये चोरी की, इसके लिए 2 साल, उसने ये रेप किया, उसके लिए 7 साल, उसने ये किया, एंड उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट फॉर मर्डर. अब लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल गई तो इसका मतलब उसका बाकी सारे ऑफेंसेस कवर हो गए. सर अगर उसमें 10 साल मिलती तो 10 साल के अंदर 7, 2, 3 सब कवर हो जाते. तो जो हाईएस्ट होता है वो काउंट करने का रहता है. समझा? द प्रिंसिपल ऑफ हाईएस्ट इज टेकन इन सीआरपीसी. ऐसा मत कर देना जो यूएस में होता है 7 + 2 + 3. ऐसे बेचारा तो वैसे ही लाइफ में गया हो. तो हम लोग हाईएस्ट वाला रूल फॉलो करते हैं. व्हाट इज द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन सेंटेंसिंग? सुप्रीम कोर्ट सेंटेंस देता है. आपने पावर सारे पढ़ लिए, सुप्रीम कोर्ट सेंटेंस देता है. व्हाट इज द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन सेंटेंसिंग? क्या लगता है? ओके. रिवीजन में भी सबके लिए एकदम नई नई इंफॉर्मेशन चल रही है. ऐसा लग रहा है पहली बार पढ़ रहे हैं सर. Okay, Supreme Court can authorize any sentence as per law.
जो हाई कोर्ट की पावर्स होती है पूरी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है. दे कैन ऑथराइज एनी सेंटेंस एज पर लॉ. ओके. देन what is the role of high court in sentencing? Well, they can provide any sentence as per law under section 28 of CRPC. Chalo, good one. What is the role of sessions and additional sessions judge in sentencing? Okay. So they can authorize any sentence as per law. However, sentence of a death there must be confirmed by the High Court under section 28(2) of the CRPC. Okay. So they can pass any sentence, but only for death they need a confirmation from the High Court. Okay. What is the role of assistant session judge? Well, he can pass any sentence as per law except the sentence of death, life imprisonment, or imprisonment exceeding 10 years. Okay. Then, what is the purpose of section 28, subsection 3 in CRPC? What is the purpose of section 28, subsection 3? ठीक है, चलो sections वैसे ही तुम्हारे हिले हुए हैं. 28(3) authorize any sentence except that of death, life imprisonment or 7 years वाला. That is जो नीचे आपने पढ़ा वही था. What is the jurisdiction of chief judicial magistrate? Is 7 years. Chief judicial magistrate. Okay. So they have the authority to impose any sentence as per law except death, imprisonment for life or exceeding 7 years. Same वही है. तो ये मैंने कब बोला चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का तो अलग है 29. 28(3) सिर्फ ये पेनल्टी प्रिस्क्राइब करता है जो एप्लीकेबल टू सुटेबल जजेस. What is the jurisdiction of judicial magistrate of the first class? Judicial. So they can pass any sentence of imprisonment not exceeding 3 years and a fine not exceeding 10,000 or both. 3 years or 10,000 or both. 3 years or 10,000 or both. 3 years or 10,000 or both. Okay, very good. What is the jurisdiction of judicial magistrate of second class? Okay, so they can impose a sentence of imprisonment not exceeding 1 year or a fine not exceeding 5,000 rupees. So any sentence not exceeding 1 year or a fine not exceeding 5,000 rupees or both. Perfect. Very good. What is the jurisdiction of special judicial magistrate? Special judicial magistrate. क्या लग रहा है? Okay. So they can impose sentence of an imprisonment not exceeding 3 years and fine not exceeding 5 years. Perfect. Very good. So not exceeding 3 years or fine not exceeding 5. ठीक है? Describe the inherent powers of High Court under section 482 of CRPC. What are the inherent powers of High Court under section 482 of CRPC? What are the inherent powers of High Court under section 482 of CRPC?
चलो बताता हूं. The High Court has powers to make orders to give effect to any order under CRPC and prevent the abuse of processes and secure the end of them. मतलब 482 के टाइम पे मैंने आपको बताया था 482 यूज करके हाई कोर्ट किसी की भी एफआईआर कैंसिल कर सकती है, किसी को भी जेल से रिलीज करवा सकती है, किसी की भी चलती हुई प्रोसीडिंग्स को बंद करवा सकती है. यह हाई कोर्ट के पास सफिशिएंट पावर्स है कि वो किसी भी केस को बीच में भी खत्म करवा सकती है. पर ये बहुत ही सोच समझ के यूज करनी है. मैं बार बार बोलता था बहुत ही सोच समझ के यूज करनी है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला है ये बहुत बड़ी पावर्स है हाई कोर्ट के पास. ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है, ये हाई कोर्ट के पास ही है 482 की. सुप्रीम कोर्ट को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पावर यूज करना पड़ता है, पर हाई कोर्ट के पास सेक्शन में पावर दी गई है कि वो किसी की भी एफआईआर कैंसिल. इसलिए पॉलिटिशियंस वगैरह एफआईआर होते ही या मीडिया पर्सन एफआईआर होते ही सीधा 482 के लिए हाई कोर्ट के पास भागते हैं कि एफआईआर कैंसिल करवाओ. तो एफआईआर कैंसिल कर सकती है, चलती हुई इन्वेस्टिगेशन रोक सकती है, यहां तक कि चलता हुआ केस भी बंद करवा सकती है. हाई कोर्ट के पास वो सब राइट्स है, लेकिन दे हैव टू यूज दिस पावर्स वेरी स्पैरिंगली, वेरी थिंकफुली एंड थॉटफुली. ओके, क्योंकि ये अल्टीमेट पावर्स है. देन व्हाट कैन हाई कोर्ट डू विद द इनहेरेंट पावर्स फॉर 482? तो चलो वो भी बता देता हूं. हाई कोर्ट कैन क्वॉश एफआईआर्स, हाई कोर्ट कैन क्वॉश इन्वेस्टिगेशंस, हाई कोर्ट कैन क्वॉश criminal proceedings which is pending before it or any subordinate court. That they can do with 482. That's the power of 482. Okay, very wide powers. Then how should the inherent powers of high court under 482 be exercised? So they has to be exercised very carefully. That's it. So they has to be exercised sparingly and with the caution and note of a miscarriage of justice in preventing it. So ऐसा ना हो कि इससे गलत लोगों को रिलीज मिल जाए और ऐसा लगे कि अमीर लोगों के लिए कोर्ट बना हुआ है. So that has to be thought. Okay. What are the limits of magistrate powers to award imprisonment in case of default in payment of fine? 1/4 wala. Yes. So according to section 30, the imprisonment in the default in payment of fine should not exceed the powers of the magistrate under 29. Additionally, if the magistrate has been awarded as a part of substantive sentence, it should not exceed 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict as a punishment for the offense. Okay, so total should not exceed. Okay, should not exceed the power of the magistrate and it should not exceed the punishments. Clear? समझा? याद रहेगा? ठीक है, चलो और भी क्वेश्चंस देखते हैं. Some other branches of questions. What does section 42 of CRPC state regarding the arrest of a non-cognizable offense? What does section 42 of CRPC state about arrest for a non-cognizable offense? Warrant compulsory है. Okay, it states that if a person is accused of a non-cognizable offense, refuses to give their names or false names or residence, they will be taken into custody and they cannot be detained beyond 24 hours till the true name can be ascertained. याद आया? और एग्जाम पे आंसर वारंट कंपलसरी में चला गया. समझ में आया? ये होता है एग्जाम में, हमें क्लिक नहीं होता, अरे यार ये क्या था, एंड इट गॉन अप. ठीक है. देन describe the power of Supreme Court's observation in the case of Arnesh Kumar versus State of Bihar. Anyone? Arnesh Kumar versus State of Bihar. Anyone? Well, ठीक है. Come to that. The power of arrest is often misused, leading to the arrogance and corruption amongst the police, and they emphasize the need to caution and stated that the arrest should not be made solely on the ground based on non-bailable and cognizable nature. ये समझाया भी था कि पुलिस वालों को ब्लाइंडली जाके अरेस्ट नहीं करना है,
पुलिस वालों को ध्यान रखना है कि मैटर में कुछ ऑफेंस साबित हो रहा है. द अरेस्ट शुड नॉट बी यूज बाय अ पॉलिटिकल वेंडेटा कि जाओ इसको पकड़ लो. It should not be misused, leading to arrogance and corruption on part of police. They emphasize the need to be cautioned and should not be solely made, okay, basis of cognizable offenses. Okay. Does Section 41D of CRPC protect the rights of arrested person? Does Section 41D protect the rights of arrested person? यही मालूम पड़ता है ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी कहां गई. ठीक है चलो. 41D allows the arrested person to meet an advocate of their choice during the interrogation. Okay? To meet the advocate of their choice during the course of interrogation. What are the duties of a police officer while making arrest according to 41B? तो वही हुआ ना क्लियर. तो इतना तो वही हुआ. Okay, so here it is. The police officer must bear a visible identification, prepare a memorandum of arrest attested by a witness, inform the person arrested of his rights, and relative and friend inform of their arrest. Okay, so there has to be a clear, visible identification. You prepare a memorandum of arrest. You have to inform the person of their right to be arrested. Okay, and inform their arrest. तो ये clearly आना चाहिए. What does section 41A of CRPC states? Okay. Section 41, the police officer issues a notice directing the person against whom the complaint has been made, a credible information has been received to appear before him. So direct the person to appear before him, okay, against whom the complaint has been made to appear before him. Clear? Then describe the safeguards that must be followed by the police while making the arrest. Describe the safeguards that must be taken while. क्या था? The police should issue a notice to appear if the arrest is not required, and they have to follow the procedure of arrest and allow the arrested person to meet an advocate of their choice during investigation. So if arrest is compulsory, तो फिर that will be arrested. उसको drag करके लेके नहीं जाने का है, उसको arrest करके लेके जाने का है. Okay, unless and until that person is trying to avoid the arrest. How can a person arrested without a warrant if they are suspected of committing an offense outside India? How can a person be arrested without a warrant if they are suspected of committing offense outside India? बाहर की पुलिस को वारंट देने. देखो, a person can be arrested without a warrant if they are reasonably suspected of being involved in act committed outside India, which would be punishable as an offense in India, क्योंकि arrest India में हो रहा है. Okay, and they are liable to
be apprehended or they are detained in the custody in India under any law relating to extradition or otherwise. Okay, so either you can arrest in the case of extradition or you can arrest the person because uske offenses जो बाहर से refer किए गए is so serious that he should be arrested. Is that clear? Okay. Define cognizable offense. अब बोलो. इसलिए बीच बीच में डाल के रखा था कि एकदम से आता है ना ऐसे ट्यूबलाइट मूवमेंट. Define cognizable offense. So chalo, a cognizable offense means an offense which a police officer can make arrest without and has an authority established. What are the reasons for which a police officer must record? What are the reasons for which a police officer must record in writing if they do not make the arrest? What are the reasons the police officer must record in writing if they do not make the arrest? The police officer must record writing for not making if the provisions are not required in the specific case. तो अगर उसको अरेस्ट करने के रिक्वायरमेंट कहीं लिखे नहीं गए हैं तो पुलिस ऑफिसर को लिख के लेना पड़ता है कि उसने अरेस्ट क्यों लिया. ओके, द पुलिस ऑफिसर मस्ट रिकॉर्ड रीजंस इन राइटिंग फॉर नॉट मेकिंग अरेस्ट ऑफ अ arrest if the provisions of arrest are not required in specific case. हाँ, तो for not making arrest उसका अरेस्ट क्यों नहीं किया उसका रीजंस लिख के रखना पड़ता है क्योंकि प्रोविजंस में उसको छोड़ने का कुछ मतलब देयर इज नो प्रोविजन रिक्वायरिंग अरेस्ट फॉर दैट पर्सन. ठीक है. Describe the circumstances under which a person can be arrested without a warrant. House breaking वगैरह वगैरह. A person can be arrested if he has committed any kind of cognizable offense or he is a proclaimed offender or he possesses any kind of stolen property or he obstructs the police or he escapes from lawful custody suspected of being a deserter or involved in an offense committed or breach of any rules of release convicts or there is a requisition from another police officer. So these are the instances where the person can be arrested without a warrant. बराबर. Committed offences of cognizable, proclaimed offender, possesses any stolen property, obstructs a police officer, escape from a lawful custody, suspected of deserter of armed forces, involved in offence, and breach of rules and duties. Clear? What is the definition of arrest according to the law? What is the definition of arrest according to law? What is definition of arrest? इसलिए बोला according to law. And the answer is arrest consists of taking into custody of any person under authority empowered by law for the purpose of holding and detaining him to answer a criminal charge and preventing the commission of a criminal offense. So remember, arrest consists of taking a person into the custody of another person under authority empowered by law for the purpose of holding and detaining such person and to answer criminal charge and preventing commission of offense. That is called arrest. Clear? याद रखना, what is arrest? ठीक है, क्योंकि आप पढ़ तो रहे हो लेकिन पता नहीं अरेस्ट क्या होता है. Okay, what can when can inherent powers under 482 be exercised by High Court? High Court ये यूज कब करता है वैसे 482 के पावर्स? हाई कोर्ट के पावर्स आपको मालूम है, रिलीज कर सकता है, कॉश कर सकता है, ये यूज कब करता है?
15 अगस्त को। Well, the inherent powers can be exercised only when no remedy is available to the litigant and not where the specific remedy is provided by a statute. If the effective alternative remedy is available, the High Court will not exercise this power. केस लॉ की जरूरत नहीं, ये तो लॉ ही है। ओके, तो ये जनरलिटी है। दैट इज हाई कोर्ट 482 कब एक्सरसाइज करता है? किसी को जेल ले गए, हैबियस कॉर्पस रिट अगर आप कर सकते हो तो वो हो जाएगा, और हैबियस कॉर्पस रिट के सामने जो पावर है वो 482 है। हैबियस कॉर्पस कब कर सकते हो? व्हेन नो अल्टरनेटिव रेमेडी इज देयर। 482 कब कर सकते हो? व्हेन नो अल्टरनेटिव। तो वो दोनों उसमें ही है, समझा? बिकॉज वेर एवर देर इज अल्टरनेटिव रेमेडी, there is no requirement to exercise this powers. Why? Because then you can go in appeal or file an application or a petition. So that is why it is stated that High Court can exercise this power when no alternative remedy is available. Then this power can come into picture, and once this power comes into picture, इसका मतलब हाई कोर्ट अपने सीरियस पावर्स एक्सरसाइज कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है ये कहीं जा ही नहीं सकेगा, लीगल राइट्स ही नहीं है इसके पास। क्यों? क्योंकि इसको जिस प्रोविजन में अरेस्ट किया ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है। क्लियर? तो कभी कभी इस तरह के अरेस्ट को बचाने के लिए हाई कोर्ट कैन एक्सरसाइज दीज काइंड ऑफ पावर, ऐसा भी होता है। डिस्ट्रॉय द प्रिंसिपल, ओके, इन एक्सरसाइज ऑफ इनहेरेंट jurisdiction. What is the principle behind exercising the inherent jurisdiction? 482 यूज करते समय हाई कोर्ट दिमाग में क्या रखता है? Okay, the exercise of the power is not resorted for a specific provision and redress of a grievance. ये जो पावर है ये हम कोई स्पेसिफिकली किसी ग्रीवियंस को सॉर्ट आउट करने के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, and it should be exercised sparingly to prevent the abuse and process of justice. It should not be exercised in express which is barred by law or engrafted in the court. ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि जब भी हाई कोर्ट इस 482 को यूज करे, पहला, अगर लॉ में स्पेसिफिक प्रोविजन है तो यूज मत करे, अगर लॉ में उसका स्पेसिफिक प्रोविजन है मत करे। दूसरा, यूज करने से पहले अपने आप से पूछे क्या इसकी जरूरत है। दैट इज कॉल्ड यूजिंग स्पैरिंगली। स्पैरिंगली का मतलब होता है सोच समझ के यूज करना। तो यूज करने से पहले अपने आप से पूछे क्या इसकी जरूरत है, क्या ये एंड्स ऑफ जस्टिस को मीट करेगा, क्या इसकी जुडिशियल रिक्वायरमेंट है। और तीसरा, इट शुड बी एक्सरसाइज अगेंस्ट, अगर अगर किसी लॉ में कोई बार है मतलब रोका हुआ है, तो इसको यूज करने से पहले हाई कोर्ट को भी रुक जाना चाहिए। जैसे अगर किसी ने टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी की है तो उसको कभी भी उसके खिलाफ एफआईआर कॉश नहीं होनी चाहिए, ऐसा पार्लियामेंट ने लॉ लिखा होगा, जिसको लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। तो फिर हाई कोर्ट को 482 यूज करने से पहले रुक जाना चाहिए। ओके, हाई कोर्ट के पास वो ताकत है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को भी उड़ा दे, लेकिन वो यूज करने से पहले उसको रुक जाना चाहिए। क्योंकि अगर पार्लियामेंट का कोई लॉ है कि टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी में अगर किसी को अरेस्ट किया है तो उसको बेल वगैरह पे या 482 यूज करके छोड़ना नहीं चाहिए, तो हाई कोर्ट शुड नॉट यूज दिस पावर। रादर उस एक्टिविटी में हैबियस कॉर्पस ही बेस्ट रिट होती है कि अगर आपके किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया तो हैबियस कॉर्पस इज द बेस्ट रिट। 482 विल नॉट कम टू योर रिलीफ। ओके, सो इस चीज का ध्यान रखने का। एनी केस लॉ, देयर आर मेनी केस लॉ इन मॉड्यूल के और क्वेश्चंस, लेट्स कंप्लीट दैट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी? ये पढ़ा है, ये पढ़ा है। That procedure where the detention of a person is arrested without a warrant and specify the time limit for producing the person before the magistrate of the nearest magistrate. याद आया? So अगर किसी पर्सन का अरेस्ट हुआ है तो उसको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा विद इन 24 आवर्स। याद आया?
167 CR पढ़ा है ना? वही है। अच्छा, when can a person be kept in custody for a period not exceeding 24 hours? When can a person be kept in custody for a period not exceeding 24 hours? ये पढ़ा है ये? The person can be kept in custody for not exceeding 24 hours when the arrest was without any warrant. क्योंकि अगर उसका अरेस्ट बिना किसी वारंट के हुआ है तो आप उसको 24 घंटे से ज्यादा रख नहीं सकते। वारंट किधर था? ओके, क्लियर। अनलेस उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने डालना पड़ेगा। उधर भी क्लियर है। क्लियर। तो यू कैन नॉट कीप अ पर्सन इन कस्टडी विदाउट एनी वारंट या विदाउट एनी चार्ज अगेंस्ट हिम। ओके, दैट इज सेक्शन 76। What is the time limit for producing arrested person before a magistrate? 24 hours from? So according to section 22 of the Constitution of India, arrested person must be produced before the magistrate within 24 hours of his arrest. Okay, article 22 के हिसाब से preventive detention law. What does section 48 of CRPC authorizes a police officer to do? What can 48 authorizes CRPC? ये पढ़ा ये? The police officer can pursue the offender without a warrant into any place in India for the effecting his arrest. That is 48 authorizing. The police officer can pursue कि कहां पे भी भाग के जाएगा उसके पीछे पीछे वो गाड़ी लेके जा सकता है. If you remember that. So that authorizes that. Good. Define section 47 of CRPC. What is 47 of CRPC? नहीं देखा. ये पढ़ा है? It allows the police officer to use the discretion in exigent situations. उसे अपना राइट यूज करने का तरीका है ऐसी सिचुएशंस के अंदर जहां पे इमरजेंसी है. ओके, इमरजेंसी है इसका मतलब वो अपनी गन वन भी निकाल सकता है. तो दैट्स कॉल्ड एक्सीजेंट सिचुएशंस, इमीडिएट सिचुएशन. ओके, जहां पे पुलिस ऑफिसर को अपना राइट यूज करने का टाइम आ जाता है. ओके, देन व्हाट स्पेशल सेफगार्ड्स आर इन प्लेस फॉर अरेस्ट ऑफ अ वुमेन? अच्छा. So unless in the case of women's submission to a custody on a oral intimation of arrest shall be presumed, a police officer shall not touch a person of a woman for making arrest unless the circumstances require or the police officer is a female, and no woman can be arrested after the sunset and before sunrise except in exceptional circumstances with the prior permission from the judicial magistrate. ओके, ये विमेन अरेस्ट के लिए याद रखना. विमेन सबमिशन टू अ कस्टडी ऑन अ ओरल इंटीमेशन ऑफ अरेस्ट शैल बी प्रिज्यूम कि विमेन ने ओरली भी जो स्टेटमेंट दे दिया दैट विल बी सफिशिएंट. पुलिस ऑफिसर शैल नॉट टच इट अनलेस देयर इज एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस एंड विमेन ऑफिसर शैल बी देयर एंड नो वुमेन कैन बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट. यानी सीरियस क्राइम्स के लिए मैजिस्ट्रेट ने अलाउ किया है, देन यू कैन अरेस्ट. Okay, then how arrest to be made according to section 46 of CRPC? How arrest to be made? Yes, arrest to be made actually by touching or confining the person to the body can be a necessary means as can be used to have a forcible.
तो सामने वाला अगर रेजिस्टेंस ले रहा है तो यू कैन टच द पर्सन, कन्फाइन द पर्सन फॉर दैट रेमेडी. दैट इज हाउ अरेस्ट हैज टू बी मेड. ओके. देन describe the protection which is provided to the members of armed forces. Armed forces. So the member of armed forces can only be arrested with the consent of, if they are doing something in discharge of their, yes, the members can be arrested only with the consent of central government if doing something in now. Continuing further, what can the court specify in a search warrant under section 93? What can the court specify in a search warrant under section 93? Well, the court can specify the particulars of the place and the part thereof to be searched in the warrant. कौन सी place, कौन सी जगह पे जाके आप सर्च कर सकते हो. याद है मैं बोला था unless until there वारंट में लिखा होगा ये जगह, और जनरल सर्च होती है तो पूरा एरिया सर्च होता है, बराबर. और आप किसी के घर पे सर्च जा रहे हो तो वारंट पे लिखा होना चाहिए किसके घर पे जाके सर्च करनी है. या अगर आप किसी पर्सन को सर्च कर रहे हो तो उसका नाम या उसका इंडिकेशन लिखा होना चाहिए किस पर्सन को सर्च कर रहे हो. क्लियर. देन व्हाट आर द टाइप्स of cases can a district magistrate, subdivisional magistrate or magistrate of first class can issue a search warrant? What are the types of cases जिसमें district magistrate, subdivisional magistrate or magistrate of first class can issue a search warrant? नहीं, ये कुछ याद रखना. They can issue search warrant involving cases, search of a place suspected to have a stolen property, forged documents, objectionable articles, as well as cases of a search of a person wrongfully confined. They have search of a place where there is a stolen property, forged document, objectionable article, or search of persons who have been wrongfully confined. इसके लिए ये कोर्ट ऑर्डर दे सकते हैं. District magistrate, subdivisional magistrate, magistrate of first class. Got it? Clear? Then, what is the purpose of section 165? 165 search वाला purpose क्या था? Exactly. The police officer can do a general search by a police officer if they have reason to believe that anything is necessary for investigation may be found. Okay, the police officer can conduct a general search if they feel that something is there उस area में. वो होता है general search. That is not a specific search. इसके लिए मुझे warrant चाहिए. Then, what must a police officer do when conducting a search in 165 CRPC? Record. He has to record in writing the reasons for conducting the search. कि वो उस एरिया में उतने बजे क्या कर रहा था. ओके, या पुलिस वालों को भी लिख के रखना पड़ता है कि वो उस एरिया में उतने बजे क्या कर रहा था, वो जनरल सर्च वहां पे करने क्यों गया था. ठीक है, उनको भी रीजंस क्लियर पड़ते हैं. डिस्क्राइब द स्टेप दैट पुलिस शुड टेक व्हाइल कंडक्टिंग अ सर्च अंडर द सीआरपीसी. अगर पुलिस किसी एरिया की सर्च करे तो क्या क्या स्टेप्स they should take while conducting the search. Right? Well, they should take all the steps under section 100 and 165 while conducting the search. Simple. अगर कोई एरिया में कोई मिल गया, कौन था, कुछ ऑफेंसिव चीजें दिखी कि नहीं दिखी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिखा कि नहीं. सिंपल वही रिकॉर्डिंग. इतने बजे हम निकले थे, जनरलिटी में हम लोग को दुकानें चालू दिखी, ये सब चीज वो नोट करते जाते हैं बस. ओके. कई बार आपने देखा होगा पुलिस की वैन घूमती है, धीरे 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 वैन चल रही है. आप बोल रहे हो साला इतना ढीले चला रहा है, पीछे वाली गाड़ी रुक रही है, लेकिन वो धीरे ही चलाएगा, उसको पूरा एरिया ध्यान से देखना है. ओके.
So that's called general search. What is the effect of non-compliance with section 100 and 165 in a case? Well, simple tha. If there is a non-compliance, it would amount to be an irregularity, and the effect on the main case depends upon the facts and circumstances of each case. तो अगर जनरल सर्च बराबर से नहीं की गई तो इट विल बी अकाउंटिंग एन इरेगुलरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पुलिस ऑफिसर, और बाद में अगर कोई केस हाईलाइट हुआ तो यस इट विल अफेक्ट द केस ऑल्सो, कि पुलिस की नजरों से चूक कैसे गया, इतना बड़ा यहाँ पे ऑफेंस होके गया। ओके जबकि वो एरिया में पुलिस वाला घूम रहा था। ठीक है, सो दैट इज द इम्पैक्ट। एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इलीगल सर्च बाय अंडर सीआरपीसी, because search can be legal as well as illegal. Well, the illegality will not affect the validity of the articles or vitiate the recovery of the articles. The search would not have the same credibility if the safeguards were not followed. The illegality will not affect the validity of the article or vitiate the recovery. मतलब पुलिस वाले को अगर कुछ मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोर्ट ऑफ एविडेंस में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, भले सर्च इलीगल थी। ओके बट हाँ, however search would not have the same credibility। जो पुलिस वाले ने वारंट लेके गया होता तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। तो ये आर्टिकल उसने खुद ने इम्प्लांट किया है या ये था उधर, ये कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। Okay, relying on him will be a difficult task in that case. Okay, and when must the police officer in charge of a police transmit a copy of diary, case diary, to the nearest judicial magistrate? 24 hours में देना चाहिए। Yes. Yeah. The police officer must promptly transmit the copy of the entries diary when a person is arrested or person is detained in the custody and it appears to the investigation that he cannot be completed in 24 hours. कि 24 घंटे में इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती तो इसको रखना पड़ेगा, तो पुलिस डायरी सबमिट करनी पड़ती है कि हमने इसके अरेस्ट के टाइम पे क्या क्या चीजें देखी, किन किन लोगों से मिले, क्या क्या हुआ, ये पूरी डिटेल्स डालनी पड़ती है। ओके देन what is the maximum term of detention of by a magistrate under 167 of CRPC? Well, the maximum term of accused in custody will not exceed 15 days under 167. 15 दिन का देता है, बाकी के एक्सटेंशन बाद में, लेकिन 15 दिन से ज्यादा नहीं। 15 डेज का साइकिल था, याद है। देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ समरी ट्रायल इन सीआरपीसी? स्पीडी डिस्पोजल। या summary trial is nothing but a speedy trial for dispensing the formalities or delays in the proceedings. Okay, फटाफट केस खत्म होता है, that's called summary trials. ठीक है? How should a police officer complete an investigation under CRPC? How should a police officer complete an investigation under CRPC? Well, on completion, the police officer should forward a police report with the prescribed details to the magistrate empowered to take the cognizance of the offence, along with all relevant documents or extracts which the prosecution intends to rely. So they have to submit a police report along with all the details to take the cognizance to the magistrate, so that the prosecution ka advocate, prosecuting lawyer, public prosecutor should have all the records to produce it to the court concerned. That's how he has to close the investigation. इसको बोलते हैं ट्रायल स्टार्ट होना, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बंद हुआ, रिपोर्ट फाइनलाइज हो गई, अब ट्रायल शुरू हुआ। अब पुलिस बैठ के ढूंढेगा नहीं, अब कोर्ट केस चलेगा। ओके, जो अरेस्ट करने थे कर लिए, सब कोर्ट केस चलेगा। In the case of State of Punjab versus Balbir Singh, what was the Supreme Court decision for the non-compliance? State of Punjab versus Balbir Singh.
Okay. Yeah. Held that non-compliance of Section 165 would amount to be an irregularity, and the effect on the main case depends upon the facts and circumstances of the case. Exactly. ये स्टेट ऑफ बलबीर सिंह का केस. ठीक है. Describe when a search warrant can be issued under Section 93 of CRPC. नहीं. लो. Search warrant can be issued when the court has reason to believe that a person will not produce a required document or a thing, or when the document or thing is not known to be in anyone's possession, or when a general search or an inspection is necessary for inquiry, trial, or proceedings. That's when the search warrant can be. ओके. तो जहां पे डाउट है या तो वो डॉक्यूमेंट लाएगा नहीं, या पता ही नहीं डॉक्यूमेंट किसके पास है तो ढूंढना पड़ेगा, या वो पर्सन किधर है उसको ढूंढना पड़ेगा, तो दैट्स व्हेन अ सर्च वारंट इज नीडेड. ठीक है. हु कंडक्ट समरी ट्रायल्स? आई डोंट नो, आई नेवर डिड इट. Yes. Chief Judicial Magistrate, Metropolitan Magistrate, Magistrate of First Class are empowered to conduct summary. ठीक है. List some of the offences that can be tried in summary way. C79, 380, 381, Indian Penal Code, not value exceeding 2000 rupees, receiving so and so, property value not exceeding 2000 rupees, concealment or disposal of a stolen property, property value not exceeding 2000 rupees. Okay. Then insult with intent to provoke a breach of peace, abetment of any of the foregoing provisions, any attempt to commit a foregoing offense. 2000 रुपया, 2000 रुपया, आई थिंक ये आपको पढ़ाते समय भी दिखाया था, पढ़ाते समय भी बोला था उसको 2000 कर लेना, वो फिगर को मैंने बुक नोट्स में भी बोला था, अगर 2000 नहीं है तो. बराबर. What happens if the nature of the case is deemed as undesirable for summary trial? अगर वो summary trial नहीं हो सकती उसमें तो उसमें हम लोग शुरू कर देंगे. A magistrate can recall any witness who have been examined or proceeds and rehear the matter and provided in CRPC. यानी वापस से केस शुरुआत, इसको रेगुलर ट्रायल बोलते हैं. ठीक है. What procedure should be followed in all summary trials? What procedures should be followed in all summary trials? Simple. Simple. वही summons case procedure has to be followed in all summary trials because it's a summons case. Summary trial cannot be warrant cases. Okay. What is the maximum sentence imprisonment can be passed in case of conviction in a summary trial? Yes. No sentence exceeding 3 months can be passed. Perfect. Describe the process of judgment in a summary trial. Well, magistrate has to record the substance, evidence, provide for brief statement and reason for findings. That's how a judgment is passed. Okay. Then, what is the meaning of compounding of offense? So, it's a settlement of an offense with the consent of the court. Perfect. Settlement of offense with the consent of the court. Define compoundable offense. Same thing. An offense which can be settled with the permission of the court.
An offense which can. How can theft committed by a clerk or servant be compounded? How can a theft committed by a clerk or servant be compounded? The owner of the stolen property can compound it. The owner of the property can. Do you need the permission of the court for compoundable offenses under 325, 337, 338? Okay? No. The person whom grievous hurt has been caused can compound the offense. Okay? Do you need the permission of the court for compounding offense? जिसको अगर आपने चोट पहुंचाई अगर वो सामने से केस विड्रॉ करता है तो you don't need the court permission for that. Okay? Describe the offense of criminal breach of trust. It involves the breach of trust by a person who is the owner of the property on which the breach has occurred. Okay? Who can compound the offense of cheating with the knowledge that wrongful loss was ensued to the person with the interest to protect the offender? Exactly. The person who has been cheated. The person who has been cheated only can compound such offenses. Perfect. Very good. What is the role of a magistrate in recording the judgment and summary trials? The magistrate has to sign the record and the judgment after recording the substance of the evidence, providing a brief statement and reasoning for the point. Okay? He has to sign the records कि क्यों ये summary trial था और उसका statement के साथ summary trial will be recorded. Okay? Then, what is a summary case? Well, a case that has to be disposed of at once, generally not punishable with imprisonment exceeding 2 years, is a summary case. Okay? Fine. What are types of bail mentioned in the content? Exactly. The bail can be a regular bail or it can be interim bail or anticipatory bail. Okay? Perfect. Define a regular bail. Perfect. A bail is granted after the offense is committed is called a regular bail. Perfect. And how a bail is granted in cases of bailable offenses? How a bail is granted in case of bailable offenses? Simple. According to 436, if a person accused of a bailable is arrested or detained without warrant, they can be released on bail if they are prepared to give it. So if a person is arrested without any warrant, तो वो जाके application करे और he can be released without any warrant. ठीक है? What are the conditions for releasing a person on bail in case of non-bailable offences? In case of non-bailable offences, a person may be released on bail if there is no reasonable ground to believe that they have committed an offense punishable with death or life imprisonment. There is no reasonable ground to believe that he has committed the offense with ओके ऐसा कोई ऑफेंस नहीं किया जिसमें उसको डेथ या लाइफ देनी पड़ेगी तो देन इट कैन बी कंसिडर्ड उस एप्लीकेशन को सुना जा सकता है Describe the conditions under which the accused of a cognizable offense can be released of. हाँ वही है perfect. A person may be released on bail if they have not been previously convicted for the offense punishable with death, life imprisonment or imprisonment for 7 years. They can also be released on a bail if they have not been previously convicted for 2 or more occasions of the same cognizable offense for 3 years or more,
Additionally, the court may direct the release of a bail if a person is of 16 years of age, is a woman, is a sick firm, or any other condition as may be. तो वही वो section है. Okay, I could not what are the conditions under which the person accused of a cognizable offense can be? तो वही है. इनफैक्ट उसको इस पूरे बॉक्स में डालने में टाइम लग गया क्योंकि एक्सेल शीट की भी एक लिमिट होती है तो उसके अंदर वो कॉलम कुड नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड दैट. रो हाइट उससे ऊपर नहीं ले रही थी. Got it? So a person can be released if he has not been convicted of an offense and they were released on bail if they could not be previously convicted for two or more offense. Additionally, the court may direct the release of the bail. Got it? So वो 16 years वाला तो था ही लेकिन ऊपर के बाद चीजों को भी याद रखना. आज से पहले कभी भी उसने डेथ वगैरह नहीं किया था. आज से पहले कभी भी ऐसा कोई ऑफेंस नहीं किया जिसमें 3 साल से ज्यादा का जेल किया हो तो उसके रिलीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ओके इनफैक्ट यही ग्राउंड होता है जहां पे जाके अगर आपके नेबर या आसपास में किसी को अरेस्ट हुआ है और बेल करवानी है तो दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड यू कैन से सर आज से पहले कभी इसका अरेस्ट नहीं हुआ. ही इज अ पर्सन ऑफ गुड सोसाइटी मेंबर एंड ये सब. तो उसके केसेस में उसके घर वालों की बेल से काम हो जाता है. ओके या बॉन्ड एग्जीक्यूट हो जाता है. देन व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच अ पर्सन व्हाट आर द कंडीशंस under which a person accused of a non-bailable offence can be released of bail if the trial is not concluded in 60 days. So if the trial is not conclude of a non-bailable offence is not concluded in 60 days, okay, from the first day of the fix of the evidence, then the person shall be released on bail to the satisfaction of the magistrate unless the magistrate direct otherwise. Okay, so 60 days हो गई और अभी तक कोई सब्सटैंटिव चीज ही शुरू नहीं हुई है तो इन दैट केस मैजिस्ट्रेट कन्विंस्ड है कि इसके खिलाफ कोई केस ही नहीं है. ही कैन बी गिवन बेल. याद रखना बेल दे रहे हैं ना कि उससे चार्जेस रिलीज कर रहे हैं. तो जनरली 60 डेज का एक टाइम फ्रेम होता है. जैसे अगेन रिया चक्रवर्ती केस में भी उसको बेल मिलते मिलते 60 to 90 डेज लग गए थे. ओके पर मैजिस्ट्रेट वाज कन्विंस कि इसके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन का मैटर ही नहीं बचा है. ओके इसको बेल मिल जाती लेकिन हुआ क्या था कि वो उसके भाई का केस कोई ड्रग्स वगैरह के साथ जुड़ गया था. दैट्स वाई उसकी बेल को 1 महीने की और एक्सटेंशन मिल गई. अगर आपने वो केस देखा होगा तो रिया चक्रवर्ती ब्रदर के पास ड्रग्स मिले थे. इसके वजह से फिर वो केस अलग तरह का चला गया. पर ठीक है. Then, how can a person be accused of a non-bailable offense be released on a bail before the judgment being delivered if there are reasonable grounds to believe that they are not guilty? How can a person of a non-bailable offense be released on bail before the judgment is delivered if there are reasonable grounds to believe that they are not guilty? Well, if after conclusion of the trial before the judgment is delivered, the court is of the opinion that there are reasonable grounds to believe that the accused is not guilty, then the court can release the accused on execution of a bond or without sureties, okay, for the appearance of the judgment to be delivered. Simple. Got it? So judgment, that is conclusion of the trial हो गया है and judgment is to be delivered and the court is of the opinion के reasonable ground है कि accused guilty नहीं है तो उसको जेल में रख के क्या करने का है. तो बेटर कि उसको बेल दी जा सकती है. ठीक है. Then describe the requirement for the accused to appear before the higher court in case of appeal or a petition against the judgment. Describe the requirement of an accused to appear before the higher court in case of appeal or a petition. Because appeal petition में generally accused appear नहीं होता है. Clear? So in that case, see, before the conclusion of the trial and before the disposal of the appeal, the court trying the offense shall require the accused to execute a bail bond with the sureties to appear before the higher court
when it issues notices in respect of appeal of petition filed against the judgment, and the bail bond shall be forced for 6 months, and failure to appear will result in forfeiture. तो याद है, बताया भी था, सलमान खान केस। ओके, सो अगर आपने अपने केस में अपील फाइल की है और अपील फाइल करने के बाद ऊपर के कोर्ट में जजेस आपको अपियरेंसेस के लिए बुलाते हैं, तो आपको जाना चाहिए, कंपल्सरीली जाना चाहिए। अगर आप उसमें नहीं जाते तो आपको अरेस्ट हो सकता है। अब ऊपर का कोर्ट में अपियर करने के हिसाब से आपके अपील के केस में 6 महीने तक की बेल दी जा सकती है। इस 6 महीने में ऊपर का कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपको छोड़ना है कि रखना है। ओके, अब इस केस के अंदर when notices in respect of appeal is filed और ऊपर के कोर्ट ने आपको बुलाया है कि bring that person in court, okay, तो that person can be brought in court and failure to appear can result in forfeiture। आप बॉन्ड श्योरिटी देके छोड़ सकते हो। अब सलमान खान केस में जब बैंड्रा वाला वो केस हुआ था, तो बॉम्बे हाई कोर्ट में उसको बुलाया गया था। उस टाइम पे बॉम्बे हाई कोर्ट में अच्छी खासी भीड़ भी आ गई थी, तो बॉम्बे हाई कोर्ट में बुलाया गया था। तो दैट टाइम ही हैज टू अपीयर। वो जहां पे भी शूटिंग कर रहा था उसको छोड़ के उस डेट दे दी गई थी, आना पड़ा। ओके, तो व्हेन अ हायर कोर्ट कॉल्स यू, यू शुड अपीयर, अदरवाइज बेल कैंसिल हो जाएगी। ये अपील कोर्ट की बात हो रही है। क्लियर? देन व्हाट इज एंटिसिपेटरी बेल? So Indian legal system provides a person to seek a bail in anticipation of being arrested for a non-bailable offense. So when you doubt that you could be arrested for a non-bailable offense, that's when you pray for this kind of bail. That's called anticipatory bail. Okay? Then describe the condition that may be imposed while granting anticipatory bail. कि if you are released, तो क्या क्या चीजें ध्यान रखना? Court will ask you, भाई बेल दे रहा हूं लेकिन कोर्ट क्या बोलेगा? The condition that may be imposed may include making oneself available for the police interrogation. Okay, कि जब जब पुलिस इंटरोगेशन के लिए बुलाएगी आपको आना पड़ेगा, and refraining from making inducements or even threats to the witness, obtaining the permission from the court before leaving India, and any other conditions as may be imposed. तो ऐसे कई एक्टर एक्ट्रेसेस ने फेस किए हुए हैं जहां पे इन तरह की कंडीशन डाली गई थी। आदित्य पंचोली केस सेम कंडीशन डाली गई थी उस टाइम पे जब वो अरेस्ट हुए थे। तो ऐसे कई केसेस हुए थे जहां पे इस तरह की कंडीशंस डाली गई थी, बट देन लेटर ऑन द कोर्ट हैज सुटेबली रिलीज देम फ्रॉम द चार्जेस। तो ये बेल देते समय स्पेशली इस तरह के कंडीशंस डाले जा सकते हैं। Describe what bail means. What bail is? What bail means? बस उतना ही था। Bail is nothing but release of the accused from the custody, entrusting them to the private custody or of the surety to produce them in court at the time specified. That is bail. तो अक्यूज को छोड़ के उनको उन लोगों की कस्टडी में देते हैं जो श्योरिटी बनते हैं। And as and when the court case is there, they shall have to be produced into this court. Okay. An example of continue. Oh, sorry. What is an example of a continuing offense? So this was. Example of a continuing offense is person kidnaps someone and who holds them as a captive, demanding a ransom until the victim is rescued. That's a continuing offense. A person is arrested and held as a captive, okay, until the person is rescued is example of a continuing offense. According to 472, how is a period of limitation calculated for a continuing offense?
Well, in case of continuing offense, a fresh period of limitation will begin at every moment during which the offense continues. A fresh period of limitation begins at every moment continues. How does the determination of whether the offense is continuing offense depends upon? Okay. So depends upon the language of the statute at, that creates the offense, the nature of the offense, and the purpose constituting the act. This will depend. Okay. So whether the offense is continuing or not, it depends upon the language of the statute that creates the offense, nature of the offense, और उसका purpose क्या था, purpose of the offense के ऊपर. Okay. What did Supreme Court state about continuing offense in Uday Shankar Avasthi versus State of UP 2013? सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या जजमेंट दिया था? Supreme Court observed that the continuing offense does not have a fixed connotation and cannot be universally defined under the CRPC. You cannot define a continuing offense. It does not have a fixed word. It differs from case to case. That is fixed meaning. So you cannot define by few words or fixed meaning. It differs from case to case. Okay. In the case of Supreme Court, what did the Supreme Court state in the case of Godak Patel Wolcott versus Dundaya Gurudashya Herimat regarding the okay. So held that determination, that is continuing offense, depends upon the language of the statute, the nature of the offense, and the purpose of constituting the offense. इसके ऊपर डिपेंड करता है. Okay. What is continuing offense now? So the continuing offense creates a continuing source of injury and the doer of the act is responsible for continuation of the said injury. That is continuing offense. So what is a continuing offense? A simple word is an act. Is an act that creates a continuing source of injury and the doer of the act is responsible for continuation of the said injury. Okay. Okay. How is continuing offense different from completed offense? Okay, so continuing offense that is susceptible to continuance and involves a penalty that continues until the rule or the requirement is obeyed or complied with, whereas a completed offense is committed once and for all. Got it? So continuing offense is something that keeps going on, something like your life till you die. So death is once and for all. So susceptible to the offenses. Clear? That keeps going once and for all. Okay. And describe the distinction between a continuing offense and an offense which is committed once and for all. And the answer is the same. Okay. Continuing offense is an omission of that continues and constitutes a fresh offense every time it occurs, whereas committed offense is one for all and constitute. Okay. In what cases the court defined a continuing offense as an act that causes a continuing injury? Okay. The court defines continuing offense
as an act of continuing injury was Balashikran Salvaram Pujari Vakmare and others versus Sri Dhyaneshwar Maharaj Ji Sansthan. Okay? इस केस में उन्होंने ये डिस्टिंग्विश दिया था. What is the continuing offense causing a continuing injury? Okay? हाँ, ये था. कोर्ट ने कंटिन्यूइंग ऑफेंस का डेफिनेशन दिया कौन से केस में था जिसमें ये डिस्टिंग्विश पार्ट दिया था, वो ये था कंटिन्यूइंग इंजरी के बारे में. ओके okay? What is the effect of injury in determining whether an act is a continuing wrong or a completed wrong? What is the effect of injury in determining whether it is a completed wrong or completed? Well, the effect of injury, whether the act is continuing wrong, completed wrong, the injury which is caused by the act itself continues. Okay, if the injury itself continues, it constitutes a continuing wrong. If the injury is complete and the damage has already been constituted, it's not a continuing wrong. Okay, so अगर जैसे किसी के साथ झगड़ा हो गया, एक बार झगड़ा हो गया, बात खत्म हो गई, जो मारना मारना था हो गया, दैट्स अ कंप्लीटेड रॉन्ग. लेकिन किसी ने ये रिपोर्ट डाली है कि किसी एरिया के पानी में गंदगी हो गई है और वहां पे सफाई नहीं हो रही है, तो जब तक वो गंदा पानी बिकते जाते जाएगा तब तक लोग बीमार पड़ते जाएंगे, तो दैट इज अ कंटिन्यूइंग रॉन्ग. तो जब तक उस एरिया की सफाई नहीं होगी तब तक पानी गंदा ही रहेगा. समझा? देन नाउ व्हाट इज द कंटिन्यूइंग ऑफेंस इन लास्टली? इतना सब पढ़ने के बाद नाउ व्हाट इज द कंटिन्यूइंग ऑफेंस? So that is offense. A continuing offense refers to that which is committed over a prolonged period of time. Okay. So with this, CRPC ka part is over.